Recording in. ओके सो क्या लग रहा है अभी? हो रहा है। गुड मॉर्निंग दीपक भाई। एग्जाम का पैल्पिटेशन आ एग्जाम का पैल्पिटेशन अभी पूरे अच्छा, एग्जाम का में। पैल्पिटेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ सेकंड यस सो सच्ची में बता, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? अनामिका, आपका कैसे बढ़ रहा है? अरे सुचेता, आपका भी। वेरी ट्रू तो मैम, डिप्लोमा वाले का तो समझ सकती हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत नर्वस अच्छा हूँ। अच्छा, डिप्लोमा वाले का तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो लोग पहली दफे एग्जाम दे रहे हैं। पहली दफे रक्षा मैम के क्लास में एग्जाम दे रहे हैं। उनको लगता था पहले, शुरू में थोड़े दिनों पहले दिन बहुत डर रहे थे, बराबर। फिर उनको लगा कि अरे नहीं नहीं, रक्षा मैम के क्लास में मजे है, वी आर एबल टू एंजॉय, धमाल करते, ये वो करते हैं। तो और फिर धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम पास में आया तो उनको लगता था क्लास में तो धमाल ही किया और तो कुछ किया ही नहीं, अभी कैसे करेंगे, अभी क्या करेंगे, एग्जाम कैसे देंगे वगैरह वगैरह। तो उनको टेंशन आ रहा था। लेकिन आप लोगों को क्यों आ रहा है? दो लोगों को टेंशन आता है। किसको? जिसने सचमुच में बहुत मेहनत की है उसको, या जिसने कुछ नहीं किया है उसको? मैम आपकी आज की क्लास के बाद शायद थोड़ा सा बीपी नॉर्मल हो जाए। हाँ, क्या क्या? आज की क्लास के बाद थोड़ा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्यों क्यों आज के क्लास में? अरे अभी अभी तो खत्म किया है, हाँ, एक संडे पहले, 2 संडे पहले ही तो खत्म किया है। तब तक तो हम पढ़ ही रहे थे। लास्ट लास्ट का तो सबको बराबर याद है, क्लास में भी सब लोग एकदम वो कर रहे थे। मैडम वो स्नेक और वो लेडर है ना, वैसा वाला कंडीशन हो रहा है। अच्छा, स्नेक और लेडर वाला कंडीशन हो रहा है। आई रिमेम्बर जब हम लोग का वो ऑफलाइन क्लास हुआ करता था, तो मेरा एकदम पहला ईयर था, एडवांस में पहला ईयर। मैंने पहले एडवांस ज्वाइन किया था, फिर बीच में थोड़े दिनों के लिए एडवांस और डिप्लोमा दोनों रखा था। फिर वापस मेरे पास सिर्फ एडवांस था, और फिर लॉकडाउन से वापस एडवांस एंड डिप्लोमा दोनों है। ओके, तो तब सिर्फ एडवांस ही था, और हाफ वे मतलब जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था, और अप्रैल में तुरंत एग्जाम आ गई। तो डिप्लोमा वाले लोगों ने तो मेरे को कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था। सीधा मैं उन लोगों को एग्जाम में मिली। तो दूसरे वाले को तो जानते थे, क्योंकि वो एकदम मोटे ताजे एकदम अच्छे से थे टीचर। वो जब कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं करते थे तो वो रिलैक्स थे कि प्रैक्टिकल में वो खुद तो कभी कुछ करते नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरे को देखा, इसको लगा उन लोगों को, मैं 2005 की बात कर रही हूँ, और 2005 की रक्षा और 2025 की रक्षा में बहुत फर्क है, 20 साल हो गए हैं। ओके, तो उनको लगा है मर गए, ये आई है, ये तो खुद तो एकदम पतली दुबली सी है, एकदम यंग है, वो तो कुछ भी कर लेगी। ओके, अभी हम लोगों को मार्क्स काटेगी। और उसमें से एक भाई थे, तो उनको मैंने कहा, हाँ लकीली गुजराती वो सरनेम से पता चली ना, और लास्ट लास्ट में मैंने बोला कि आप एक काम करो ना, थोड़ा सा कोशिश करो। पता ही चल गया कि पद्मासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद में आकर के बोले कि मालूम है, मैं इतना टेंशन में था, मेरे से कभी जिंदगी में पद्मासन नहीं होता है। और आज तो मेरे को शुरू में तो वही था, लेकिन आपने आकर के थोड़े गप्पे मारे, एक दो गाने गाए। नहीं, तब गाने नहीं गाती थी, तब तो मैं एकदम बेसासुर थी। तब मेरे को गुरु नहीं मिले थे जिन्होंने मुझे कानसेन बनाया था। तो थोड़ी बातें बातें की थी। बोले कि मैं फर्स्ट टाइम पद्मासन किया। बोले कि कैसे हुआ मालूम नहीं, आपने बोला ना इसलिए मैंने तो कर डाला। मैंने बोला ऐसे ही थियोरी में एग्जाम दे के आना। और फिर उन्होंने पीएचडी तक किया, और तब से हमारा रिकॉर्ड बन गया है। जो डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में आते हैं, जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, नहीं भी हुआ है, 12th भी है, तो 12th तो होते ही थे, नहीं तब 10th होते थे। हाँ, तो वो लोग आगे तो बढ़ते ही है। 80% ऑफ देम, 20% ऑफ देम दे में हैव लिटिल ट्रबल, कि भाई नो घर का प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो नहीं कर पाते। बाकी मोस्ट ऑफ देम तब से तो एकदम ट्रेंड बनने लगा, सब लोग पीएचडी करेंगे, सब लोग पीएचडी करेंगे। मेरी नहीं हुई थी तब, वो अलग बात है। करेक्ट। सो नर्वस क्यों होते हैं हम? नहीं मालूम है तब, अभी तो हमें कितना मालूम है।
हाँ, मालूम है कि नहीं सबको? अनामिका तो मेरे मेरे साथ साथ में सेंटेंस बोलते हैं। तो मैं बीच में एक शब्द नहीं बोलती हूँ तो वो मेरा वाला ही शब्द बोलते हैं। इतना रट्टा नहीं बोल सकते उसको, इतना वो आदत हो गई है। तो फिर अभी क्या टेंशन है? सच्ची में बताओ, सचमुच में है क्या टेंशन? तो उसका रास्ता है, इसलिए पूछ रही हूँ, है क्या? मैम थोड़ी एंजाइटी है कि कैसे परफॉर्म करेंगे, वो परफॉर्मेंस को लेके डर है बस। अच्छा, बाकी तो नॉलेज ये में अपना तो एडवांस अभी डिप्लोमा परफॉर्मेंस के लिए है क्या? तो फिर एंड परफॉर्मेंस नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट व्हेन वी आर डूइंग इट, तो फिर करेक्ट कर सकेंगे ना? कर सकेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हाउ मेनी स्टिल यू फील कि मैम आप कुछ भी बोल लो। आपकी बात क्या करूं, मैं मेरी खुद की बताती हूँ। हाँ, परसों रात को मैं नासिक गई हुई थी ना, स्वामी जी आए हुए थे, मैंने बताया था ना। हाँ, तो मुझे लगा था मैम मैं कैसा रहा जाऊंगी। आपका नासिक का बहुत ही ट्रिप, बढ़िया, कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। और उनकी वजह से ही कल मैं उन लोगों का भी अच्छे से क्लास ले पाई, क्योंकि है ना लास्ट मोमेंट में आप लोगों में से भी दो चार लोग ऐसे अदरवाइज ना ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि दिमाग हटे। तो वहां पे भी ऐसे ही किसी ने किया, एक दो स्टूडेंट ने ऐसा फालतू सवाल पूछा था ना स्वामी जी को, मुझे लगे कि डू यू नो कौन है? परमहंस है तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, नमस्कार करो और आगे बढ़ो, उनसे कोई एनर्जी लो। ये फालतू फालतू सा ये कैसे करने का, वो कैसे, ऐसे हाउ कैन यू आस्क? मेरे को इतना गुस्सा है कि जाके दो चाटे मारो। लेकिन स्वामी जी परमहंस है भाई, एकदम शांति से उन्होंने कहा कि ये सब क्वेश्चंस के लिए थोड़ी हम यहाँ है, लेकिन अभी पूछा है तो मैं जवाब देता हूँ। और फिर आराम से प्यार से जवाब दिया मैंने, और कहीं पे भी सार्कास्टिक भी नहीं बने। मैंने बोला यार आपने तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर ज्यादा शिष्य को आगे आना चाहिए, राइट? करेक्ट। हाँ, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, ओके, इट्स नेसेसरी थिंग्स। करेक्ट एंड सो इसीलिए हम कॉमन मैन है। व्हाट इज आवर लेवल? मूड वाला लेवल। मेहनत करते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, थोड़ा एकाग्र होते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, क्षिप्त हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। सो हम जो लेवल पे है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ ये हमारी गलतियां हैं, कोशिश करते हैं, वापस नीचे गिरते हैं, वापस कोशिश करते हैं, एंड क्या कामयाब होते हैं? कोशिशें ही कामयाब होती हैं। एंड एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर, जहां पे है जो लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया तो हमें आगे बढ़ने का वो समझ में आए। काफी लोग ऐसे वो इल्यूजन में ही रहते हैं कि नहीं नहीं अपने तो बहुत महान है, लेकिन नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमें हमारी गलतियां मालूम है, हमारे वीकनेसेस मालूम है, इतना सुनने के बाद में आप नहीं मैं खुद भी 2-4 घंटे ऐसे ही टाइम पास कर डालती हूँ, फिर खुद को कोसती हुए क्यों किया ऐसे, राइट? करेक्ट। हाँ, सो वी ऑल आर एट अ वेरी लोएस्ट लेवल, कॉमन मैन। उसको कहते हैं, वो एक मूवी आया था गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें ऐसे लोगों को है ना मूरा कहते हैं। मूरा, मूरा मीन्स वैसे मूडा, वेरी इनोसेंट पीपल, नहीं करूंगा गलती नहीं करूंगा, वापस करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे से आगे जाते हैं, फिर वापस गलती करते हैं, लेकिन फाइनली दे रीच द हाईएस्ट। एंड सो व्हाई शुड वी फ्रस्ट्रेट? वी शुडंट, वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। और इसीलिए हम सब के लिए फ्रस्टियां नहीं मूरा, नर्वसाओ नहीं मूरा। आपको भी गाना है क्या? ओके, भेज देती हूँ। रुको एक सेकेंड, मैं भूल गई, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को भेज दूंगी। मैम अच्छा हुआ आपने स्वामी जी वाला इंसिडेंस बताया। क्यों? बस अभी सब लोग कुछ ना कुछ पूछ पाएंगे ना बिंदास। अच्छा। नहीं नहीं, तो स्वामी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अभी हमने सुन लिए। हाँ आई नो, गलती हो गई है। हमारा कौन सा है? एडवांस। बाय द वे मैम, आज आप मेरा वाला पिंक पहन के आए हो। हाँ, मेरा वाला, हाँ लास्ट क्लास था ना। चलो मैंने भेजा है, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद में गाना है तो गा सकते हैं।
वो थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए ना हम लोगों को, किसी को पता नहीं चलना है कि अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है, इसलिए। ओके। प्रस्टियाँ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट डाउन नहीं मुरा, प्रस्टियाँ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट डाउन नहीं मुरा, जो भी रॉन्ग हुआ है उसे, जो भी रॉन्ग हुआ है उसे सेट राइट वा करो जी, नहीं लो जी ये जी होप, थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मोरा, जो भी रॉन्ग हुआ है उसे सेट राइट वा करो जी, नहीं लो जी ये जी होप, थोड़ी फाइट वा करो जी, थोड़ी फाइट वा करो जी मोरा, प्रस्टियाँ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट डाउन नहीं मुरा, अपसेट डाउन नहीं मुरा, घबराओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट डाउन नहीं मुरा, स्टार्टे 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 स्टार्टे, ब्रेन वारे मुरा, चढ़ ट्रेन वारे मुरा, स्टार्टेड स्टार्ट ब्रेन वारे मुरा, चढ़ ट्रेन वारे मुरा, नहीं पगला रे बन एक्ट सिन वारे मुरा, स्टार्ट ब्रेन वारे मुरा, एनी टाइम बी ए चांस वाच योर लाइफ, एनी टाइम रिफ्यूज आओ नहीं मुरा, रिफ्यूज आओ नहीं मुरा, एनी टाइम बी ए चांस वाच योर लाइफ, एनी टाइम रिफ्यूज आओ नहीं मुरा, रिफ्यूज आओ नहीं मुरा, प्रस्टियाँ नहीं, you can switch on, प्रस्टियाँ नहीं मुरा, unmute yourself, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, प्रस्टियाँ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, प्रस्टियाँ नहीं मुरा, who we all are, who we all are, pure consciousness ourselves. How can we upset down by, right? Have faith, remain connected to that, and see it will flow through you. I learned lately one thing, one prayer. I always tell my Guru and Bhagwan Ji, please flow through me. And when they are flowing through us, do we go through any trouble? No, there, right? Why should we worry? Just be the best instrument. Okay. And so with that, let us all do a prayer and start with our last class. I wanted all of us to have a happy class. Why? Because this we are not doing for diploma or advanced diploma, for MA or for anything. We are doing this learning for forever, right? Forever. That we realize I am pure consciousness, myself. In this birth itself, we should realize, at least we should walk that much that, it helps us. And yeah, in between, whenever this comes, some struggling period or something like that, this kind of things will help us, right? Yes, Samir, bye. And my feelings
why I have not started studying in deep from last 4-5 months. Why last month maybe? Because this knowledge is so deep. So once you pick up and start going inside and inside, you feel that we are running out of time before Who exam. said you didn't start? If you would not have started something or the other, you would not Right. have end up, in this class or this kind of study. Right. Somewhere or the other, something or the other. It's not compulsory to start this or that. Right. We have So no what, idea what will bring us to what. right. Correct? So, ma'am, what my request is that due to this exam pressure, some deep reading start happening. So Yes. my request is you should conduct at least prelims after a few lectures, because that will force the student at least small test. That will force us to go through at least 4-5 chapters in deep, because the last moment we feel there is so much material, but we are not able to concise and pick up. आज पता चल जाएगा. It's not so much. No, मैं it वही is so सोच रही much. थी यार, इतना तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है. कितना कम है. Vedanta over. Bhagavad Gita over. Buddhism, Jainism, and then ईश्वर सिद्धि विभूति and समाधि का ले. हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया. रट्टा हो गया है. करेक्ट. इससे ज्यादा हम कुछ किए? कुछ भी नहीं किए. और उसमें से ज्यादातर हम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था. वही रिपीटेशन है. तो है कहाँ ज्यादा? करेक्ट. हम उतना ही खा सकते हैं जितना हम खा सकते हैं. राइट. प्लेट में कितना भी क्यों ना हो. इसलिए डोंट वरी. ज्यादा नहीं है. हाँ. और एग्जाम का टाइम का अभी टेंशन आ रहा है. हाँ. आपसे ज्यादा एग्जाम का टेंशन मेरे को होता है भाई. वो पेपर सेट करो, वो पेपर चेक करो, फिर वापस हमको बोलो. और उसके लिए कितनी दफे सवाल पूछते हैं सब लोग. इतना काम नहीं कर सकते अपने. If you don't, but you don't know, we always take the exam. How many times you all answered these questions, right? In the class. So how many times we repeated it? It is like exam. It is not always compulsory to write it down. Okay. Whenever we ask, if you don't answer, somebody else is answering. But how many times it is going through your mind? Correct? That is not. What is vritti? It's loop, correct? Recorded things again and again, again and again. What we are doing? We are also putting which vritti now? Aklishta vritti. So that will remove that negative out. अगर पूरा पतीला भर के गंदा पानी है, एक रास्ता है पूरा उसको खाली करो, फिर उसको शुद्ध पानी भरो. हमारे माइंड को पूरा खाली करने का पॉसिबिलिटी है नहीं है. तो क्या करने का? सीधा उसके अंदर फुल जोश नल चालू करो, शुद्ध पानी डालने लगो. 10 मिनट में क्या होगा? क्या होगा? सारा गंदा पानी चला जाएगा. क्या बचेगा? शुद्ध पानी. That's what we are doing through our lectures, right? Okay, so let us begin with our पूरा syllabus complete करना है ना आज. Let us start with the prayer. In between, when we complete 2 chapters or 2 topics, main वाले आगे वाले, then we will remind me to give you break. Okay. Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line, shoulders and buttocks are in one line. Inhale.
Inhale. Inhale. We will do prayer to Rishi Patanjali, all of us together. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmin patanjalim pranjaliranatosmin. We will pray to Guru. Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamoolam Gururmurti Poojamulam Gururpadam Mantramulam Gururvakyam Mokshamulam Gurur Kripa Mokshamulam Gurur Kripa Mokshamulam Gurur Kripa. Put your hands by your side. Inhaling, take your hands up. Inhale, stretch. And with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru Shri Krishna,
and your Nija Guru, your personal Guru. To all the Acharyas, Rishis, Maharshis, Siddhas and Sadhakas who have reached the highest, came down for us, rewrote the scriptures, simplified the scriptures for us, gave us guidance, taught us, and holding our hands, taking us higher and higher, patiently. Connect to them, absorb their love, grace, energy, blessings, and then feel confident, feel convinced, become determined, dedicated, and then slowly come up with the decision that yes, I'll reach the highest state which my gurus, God, the universe wanted me to attain once again, the Kaivalya, in this very life itself. If you've taken your hands up, allow your hands to come down. Namo Namaha. Namo Namaha. Welcome to the complete understanding. Namo Namo, ma'am. Namo Namaha. The complete wisdom, Namo Namaha. our scriptures, which university has designed for us, so that at least we can have glimpses, at least we can have clarity at our level, and so that we can practice that easily. And as we know, in diploma, we have learned what is Indian philosophy and Sankhya and Yoga, the important concepts of yoga for clarity. Most of the concepts we have completed. Even Samadhi, Kaivalya, and Ishvara also. But not that much in detail. The concepts which we couldn't do it in detail that time, that we did in advance. And so now we have fair idea what our scriptures are for. And in that, what is Sankhya, what is Yoga, and what is the learning of yoga. Not only learning of yoga. When we are learning yoga, we understand that we are learning the scriptures. We are learning Veda in itself. Veda in nutshell, right? And so, how this yoga which we have started learning, we started making it our path, my path, mera wala pink, right? We started making it. And so, how it is connected, where it is connected. In this year, in advanced diploma, we realized that, oh yes, all the scripture says the same thing. Yes, yahi yoga ki to baat karte hain, whether it is Veda and Upanishad, whether it is Jainism or Buddhism, correct? Whether it is any other scriptures, which we are not, I mean, they are not Indian or they are not Asian literature. Even they are talking about the same thing, whether it is about Pranava Om or, being, sending that, Tathastu or Amen and all. So all of them, they have the same belief in one Brahman or one pure consciousness, right? And so to make our understanding dhrida, established, very clear, we have done in advanced diploma the comparative study. So yoga and Veda and Upanishad, yoga and Bhagavad Gita, yoga and Jainism and Buddhism, and other things also.
that, what exactly Sankhya is talking about, what Raja Yoga is all about. And then we have done Samadhi and Kaivalya, which is the epitome of our yoga system, right? The highest stage. And so what it is exactly, many people, they say, oh, Kaivalya, Kaivalya. Yes, for us also it is, oh, Kaivalya. But at the same time, we know, how can we reach? We know what, instead of, just unnecessary getting into that, worldly, jargons that, oh, कुछ बड़ा बड़ा बोल करके ऐसे. ऋषि पतंजलि ने बड़े बड़े शब्द भी बहुत आसानी से और सहजता से यूज किए हुए हैं. Correct? And so now we are quite clear about that. And so let us now just have a bird view. एक्चुअली ना हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में उसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द है. इट्स नॉट बर्ड व्यू, इट इज सिंहावलोकन. हमारे पाठशाला में पांडुरंग शास्त्री आठवले जी हम लोगों को वो हमारे एक बुक हुआ करते थे, गीता सिंहावलोकन. अब सिंह, लायन. हाँ, सो हाउ ही वॉक्स, एकदम आराम से, he owns the whole world or the whole world. And then आगे बढ़ने के बाद ऐसे देखता है. So now from this point we are seeing what journey we have walked through. And yes, this I know. Oh yes, that I know. Oh yes, this I understand. Oh yes, this I love. Correct? And so today our class is to make us feel nice, good. Okay, yes, I know it. At least words. ये शुरुआत है, राइट? अगर शुरुआत ही नहीं की होती तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं थे, तो फिर कभी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, राइट? एंड सो इट इज सो वो सिम्हा है ना, वो गर्व से ऐसे देखता है, वो डर के मारे से नहीं दिखता है कि क्या हुआ, कोई आया नहीं है मेरे पीछे से. वो डरता है कि कोई भी तू आ, अपने को मालूम है, मेरे को तो सब आता है. करेक्ट? एंड सो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी विथ दिस. एंड सो is yoga ancient or not? Yes, very ancient. Is Rishi Patanjali gave yoga? No. Before that, before Rishi Patanjali, many people have given, many sadhaks, many siddhas, many rishis, maharshis, nathas have given. So how yoga started? Yoga started from Lord Shiva. It's Tantra system. And what is Tantra system? Tantra system is very simple. Yes, very simple. What very simple Tantra system is? That all that system which helps us to expand, take our consciousness to higher level. And all that systems which helps us to come out of all our negatives or weaknesses, or all that limited nature which is holding us down. So it is helping us to come out of limiting nature. At the same time, through that, it is helping us to expand, to go higher, take our consciousness at a higher degree. And that is what is Tanoti and Trayati, Trayati and Tanoti. That is what Tantra is all about. And so all that system started, given by none other than Apaurushaya Tattva, pure consciousness itself. And so this pure consciousness itself is very helpful, right? It is Chaitanyamaya, Kalyanakari, Mangalakari. And that's why we have given name to that pure consciousness is Shiva. Shiva is that pious, or not pious is also not the complete word for it, right? It is that highest reality. The one and only one. And he gave it. And so whatever pure consciousness given, then, it is given to whom? None other than the equivalent part of pure consciousness. And that equivalent part is either Maya or Shakti or Parvati. Correct? And so it has come, and when with Parvati or after Parvati or at that time only, other people also practiced this sadhana, this knowledge, this understanding, this path, this yoga, this process.
And so it was with all of them. They practiced it. They taught others. They helped others to go ahead. And then that was survived. And after many centuries, there was a need to put it together so that it becomes simplified. And so Vedavyasi has put it together with the help of course, other rishis, but he compiled it. And so Vedavyasi put that complete knowledge of Tantra, which is given by Shiva to Parvati ji. And so it is nothing else but pure knowledge, with pure knowledge, highest knowledge, valid knowledge, ultimate knowledge, only knowledge, highest knowledge. And so that knowledge is nothing else but the treasured knowledge, accumulated knowledge. It's knowledge, and that's why it is known as knowledge. It is known as Veda in Sanskrit. And that Veda, because it is, yes, complete knowledge, complete one knowledge when you put in a different way, because there are so many different people, so different styles, different practices. Whosoever reach to the same truth in any which way, all of them is included. कुछ भी बाकी नहीं. And so उसके लिए क्या होगा? It will become very big. And so Vedavyasi divided into 4. And all the 4 Veda, Rig Ved, Samved, Yajurved, Atharva Ved, all that 4 Veda is further divided into 4 chapters, 4 parts. And they are mantra or Samhita, Brahmana, Aranyaka, and Upanishad. Upanishad. So it is further simplified. So mantra and Brahmana is the chants or the shlokas or the mantras through which you can realize who you are. You can connect to that highest reality. How to use that mantras and systems and practices, and that is given. And so mantra and Brahmana is that, mantra is that, all the chants, etc., the hymns and all. That in Brahmana, how to do it, what to do it, for what purpose we should do it. So that, system is given to practice that. And in Aranyak, it further simplified. And it is given as, this particular reason, if you, as a king, you want to do what you can do. As a samanya, common man, if you want to do what you can do. So it has become then, personalized worship. And that then finally become like, one-to-one coaching like Upanishad. And there, Upanishad is actually the essence. There it is not given that much in detail about what to do and how to do. But it is, Upanishad is why to do. The conviction is there. And so, isne aisa kiya tha, he got this result. He got this knowledge this way. And so, with different stories, we have Upanishads. And it is the 4th part, 1, 2, 3, 4. First is Mantra Samhita, Brahmana, Aranyak, and Upanishad. So 4th part, it is Vedoka Ant. 4th part, last part, or highest part, and topmost. It is full of knowledge. And that's why it is known as Vedanta. So earlier part, Mantra, Brahmana, Aranyaka, Mantra, Brahmana and Aranyaka is the starting part of it. And so in that, what to do, how to do is given. And so it is known as Karma Kand. Kya karna hai, kaise karna hai. Correct? And kyun karna hai, why we should do it. So that knowledge part is Vedanta, and that's why it is known as Jnana Kand. What is given in Veda? Knowledge about highest reality, pure consciousness, Brahman, Shiva, Purusha, Atma Tattva, Parama Tattva, correct? And so, whatever is given in Veda is
what is pure consciousness and how, or because of what problem, or because of what no knowledge or wrong knowledge we came down to that level that we are not able to recognize ourselves as pure consciousness. So how can we go back to that realized level of being pure consciousness? And that is given, correct? And so we can easily say that each and every yoga is given in Veda and Upanishads. Correct? Why do we say Veda and Upanishads? Veda is Upanishad, Upanishad is Veda, right? हाँ, हम उसका नाम पहले लेते हैं ना, जिसकी वजह से हम कुछ करते हैं, कुछ समझ में आया है। तो हमें सबसे ज्यादा समझ में आया है उपनिषद की वजह से। Upanishad in it, each and every book, each and every chapter in itself is complete. Mantra is complete. Brahmana is complete. Aranyak is also complete. Upanishad is also complete. Most of us are usually, mantra, Brahmana, Aranyak is hidden for us, right? हम लोगों को 2, 4, 15, 20 मंत्र मालूम है जिससे हमें हमारे गुरु ने दिया है, बाकी हमें कुछ और नहीं मालूम है. Most of the thing is lupta for us or gupta for us because we are not interested in that. It is not needed by us. इसे गृहस्थ नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो वो हमारे लिए है ही नहीं. वो सब पढ़ने बैठेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? Correct? Yes. So we all are very near and very much connected to Upanishad. So for us, Upanishad is most important. So we always say Veda, Upanishad, Veda, Upanishad. Correct? Because for us, Upanishad is more important. The last part is more important. The end part, the climax is most important for us. Anyway, so complete Veda everywhere. Yoga is given. What is yoga? Yoga is that tantra. Yoga is that structure. Yoga is that process through which we can expand our consciousness. At the same time, we can come out of our limited nature. And so every possible path, every possible process to realize ourselves that we are pure consciousness, all that processes are known as yoga. So through yoga, through this process, what do we know? Through this yoga, through this different path, we know that we are pure consciousness. So we reach to the yoga state. What is yoga state? Yoga state means union. Or yoga state means harmony. Yoga state is realization. I am one and only one. Pure consciousness. There is no other, no second. All that second, third, fourth, fifth is become one. And that's why that yoga we attain. Yoga is that stage. There is only one reality. And so yoga is the system, is the process through which we realize our yogatva. Yoga is that stage, that process through which we realize yoga yogena yogo gyatavya. Yoga ke dwara hum yoga ko jante hain. So for us, what is yoga? Is Pashupata yoga is our yoga. Is Kundalini yoga is our yoga. We are not able to understand all the things. Most of us, commoners, right? In yoga also. 2 साल हुए, 5 साल हुए कि 50 साल हुए, लेकिन फिर भी हमारे लिए योगा कौन सा है? और एटलीस्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा में आए उसके पहले हमारे लिए योगा क्या था? वही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. और अभी भी प्रैक्टिस करने के लिए हम में से कितने लोग मंत्र साधना बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं? करेक्ट? हमें मालूम है उससे हम लोग पहुंच सकते हैं. हम में से कितने कुंडलिनी योग पे जा सकते हैं? नहीं. करेक्ट? हाँ. सो अगर हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए कौन सा योग है? हमारे योग मतलब मेरा वाला पिंक कौन सा है योग में? पतंजलि योग, राइट? क्यों? बिकॉज वी नो व्हाट इज आसन, व्हाट इज प्राणायाम, क्योंकि वो छोटा छोटा हम करते हैं. एंड सो we are trying to understand the yoga which I know, the yoga which thoda bahut I follow, whether it is there in Veda and Upanishad or not. Why Veda and Upanishad mein dekhna hai? Kyunki that is the ancient, most ancient, in fact origin. हमें अच्छा लगे यार क्या बात है, अपने तो वो वाला योगा करते हैं. करेक्ट? And so, and that is the tradition. The thing which you are following, if it is there in Veda and Upanishad, it means what? योगा में जो वेदा में जो दिया गया है, that is truth, ultimate truth, ultimate reality. So मैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ एकदम करेक्ट फॉलो कर रही हूँ.
then I become very sure about my path. Then I don't have to be worried about. So is our yoga there in Veda and Upanishad? Yes, very much there. And so we were seeing that how this, our yoga is there. Our yoga is there in Veda and Upanishad. And so when we are talking about Upanishad, as we mentioned, that there are so many. Can there be only one Upanishad? एक तो पहले तो 4 वेदों के मिनिमम 4 तो है ही, करेक्ट? ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के, वो 4 तो है ही। और उसके फिर उसके सब डिविजन, कोई कहते 108 है, कोई कहते 11 है, कोई कहते 12 मेजर है, करेक्ट? So major Upanishads are there and many other Upanishads are there. But whatever Upanishads are, they are talking about Veda. So it is talking about Brahman. It is talking about pure consciousness. It is talking about Purusha or Shiva and how to realize that. Okay, and so we have seen in different way that how different rishis mention different things about yoga, how it is, how about about asana or pranayama, what is mentioned where in Kathopanishad, what it is mentioned in our this Shveta Upanishad, then Kathopanishad and Maitreya Upanishad, or what is mentioned about pranayam or what is mentioned about asana, how to sit, what to sit. So somewhere or the other, we were trying to connect to that, this particular Upanishad is talking about that sit properly, or when you are doing like this, it is nothing else but pranayam, and it is going to take you to the realization of self, because all the pranayam takes away all the impurities. Tatakshiyate prakashavaranam. तुम्हारे हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी आवरण है अशुद्धि का, वो सारा जाता है, and we can connect to the self within, and so this take us to the higher. And so this way we understand that our yoga, the yoga which we understand, or now overall yoga, what we understand with that is existing since the origin. It was the base. Yoga is what Veda is. Veda is what yoga is. And so, when we are talking about yoga, ki kab shuru hua? So, we have to start from classical. Usse bhi pehle pre-classical. No, pre-classical period, right? From the Shiva period. And so, we divided the phase that, that time yoga was existing in what way? So that time yoga was existing as, the pure knowledge given by Shivaji to Parvati ji, correct? And then other systems. And then we have seen that, beautiful stories how Matsendranath and how Rishi Patanjali has learned this, how they got this yoga. Or, when we are talking about, Bhagavad and Purana, so how Shukadev ji, even that also they have this way, how Moses got it. Did anyone studied this knowledge? Moses or Jew mein jo bhi hai? No, everybody got it as revealed knowledge. It was given to them. Exactly like that. That is how Muhammad also got. That's what the story is same everywhere. Why? It has come from the Vedic stories, Vedic scriptures, Upanishads. And so it remains all over same. And so when we are talking about pre-classical period, so Ramayana Mahabharat se bhi pehle ka period, epic period we call it. Then Ramayana Mahabharat ka period hai. And then, medieval period aata hai. And then we are talking about a post-medieval period. And then we are talking about this contemporary period. In that, the style of yoga must have changed. But yoga has changed? No, yoga has remained same. Yoga means understanding of yoga, the purpose of yoga, and the overall process of yoga. Overall process of yoga. The purpose and process overall remain the same. Okay, and that's why, wherever we are going, wherever in the world, whenever they are doing some or the other, what, क्या बोलते हैं उसको, बहुत साल पहले का चला गया है और उनमें से निकालती है, क्या बोलते हैं उसको, पिरामिड नहीं, अरे खुद करके मम्मीज
अरे मम्मीज नहीं, अरे हम लोग यहाँ पे अभी अभी जैसे ये अपना मोहनजोदड़ो मिला, ये मिला, हाँ, मैम। बेटी अभी हम Excavated. गई हुई है, तो वो पुराने पुराने Civilization, Excavated. सिविलाइजेशन आते हैं, तो वो Excavated. तो कैसे मिलते हैं सबको, कैसे आते हैं हमारे पास? आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल, यस, Archaeology. यस, आर्कियोलॉजिकल, वो तो चेक Yes, ma'am. करने गए थे ना। हाँ हाँ Excavation. यस, हाँ, मेरा ये ना, सी नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, मेरे को ये भी याद नहीं रहता है, फिर भी यहाँ तक पहुंच गए। बोलो लो, हम लोग तो कितने होशियार हो, कहाँ पहुंचेंगे, राइट? यस, सो आर्कियोलॉजिकल सर्वेस वगैरह से हम जब भी देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ओहो, तब उससे पहले ये अपने डायनासोर से भी पहले, उसके पहले भी तो था ही ना, हजारों साल पहले की हमारी हिस्ट्री है। And all that was existing in Bharat, in India. What is Bharat? भा में रत रहने वाले लोग, वो एरिया ही ऐसा है कि जहाँ पे लोग ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, कर्म के प्रकाश के लिए, और ज्ञान कर्म एंड त्याग भक्ति के प्रकाश के लिए जो प्रयत्नशील है, वो सारे लोग हम हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रियलाइजेशन के लिए काम हुआ। क्यों? हमारे पे यूनिवर्स की कृपा थी, राइट? हम वो जगह पे जन्मे हैं, हमारे से पहले वाली जो भी हमारी सिविलाइजेशन है, कि यहाँ पे हवा, पानी, एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। एंड सो वी वर एबल टू चैनलाइज आवर एनर्जी फॉर द राइट पर्पस इन राइट वे, करेक्ट? And so we all got, such a beautiful scripture also because of that. And so from the original, we started. So what was the style of yoga that time? And so we were saying, in the beginning we were knowing it as Pashupata yoga. What is Pashupata yoga? Same tantra. What's tantra? To uplift me, tanoti, at the same time coming out of my limitations, trayati, from Pashu to become Pati, master. From the instinctive level, we reach to intuitive level. From common or below common level, we reach to the supreme level. And for that training, whatever yoga was given by Shiva to Parvati ji was everything. He spoke about Jnana yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Raj yoga, Kundalini, Hatha yoga, Dhyana yoga, Japa yoga, Dhyana yoga, so many things. Everything is inclusive. And so yoga or Pashupati yoga, and they are like an umbrella term. Every possible path for realization comes under Veda, comes under yoga. And so major were mantra yoga, laya yoga, hatha yoga, raja yoga being the last one, the highest one, or the supreme one. And from that time, most of the rishis and munis, they've sustained this yoga. There was legacy, there was, continuation. So one teacher was giving it to others, and then others were giving to many others, and that's how it all survived till now. And so when, Renaissance period has started, this contemporary period started, even that time also, who brought yoga back to our life? All the sannyasis, right? All the this sadhus and all, rishis who were practicing it, correct? And so whether we call them, from Shivananda and earlier also other people, and then, Vivekananda and all other people who have brought it, in the light, they all were sannyasis. And because of that, it has survived in right perspective. By learning this, or history we usually learn for what purpose? So if by chance there was some mistake, we should not repeat the mistake. Or if by chance something right, correct way they have done it, then we can continue doing that same way and reach the highest. And that's why,
by learning this history, we come to know that it has come to us through the highest practice by all these things. And where the yoga was, how the yoga was, and till contemporary period, we have completely seen that. And that is what is background of our knowledge, what Veda taught us and what we have seen in different way. And then so we were seeing that, how this Veda or Upanishad is there in our life, in what way it is there in our life. And so this Veda and Upanishad is Upanishad very much there in our life. And that Upanishad is nothing else but when we are talking about this, when we are talking about yoga in Upanishad is yoga when we are talking about. And so that time, we mentioned that there are three, earlier we mentioned, not today's class, that there are three main books which are known as Prasthanatrayi. That is nothing else but Veda in nutshell, Veda in itself. And so that's why we call Veda and Upanishad separately, because Upanishad is in one of them, is one of the Prasthanatrayi. The first one is Brahma Sutra, written by our Veda Vyasji. Upanishad, which was simplified by Veda Vyasji. And Bhagavad Gita, which is also been written by Veda Vyasji indirectly in Bhagavata Purana. Correct? Yeah, when we are talking about Ramayana and Mahabharata, they are our history books. They are our itihas. What is itihas? Itihas means thus it has happened. Aise hua tha. So that is the truth. That is the fact. Universal truth. And so whatever is happened that time, if we practice that, we will reach to what level they were. If you want to be Rama, follow. If you want to be Krishna, you can follow. So what kind of life they lived? They lived the life of yoga. What kind of yoga? So then we have different scriptures and that is given to us. And so when we are talking about this Prasthanatrayi, Brahma Sutra, Upanishad and Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita, Veda and Upanishad, we saw that how yoga is given. In Bhagavad Gita, how yoga is given? In Bhagavad Gita, yoga is given as Patanjali Yoga, as Ashtanga Yoga. Even as Ashtanga Yoga, it is given. The exact name Ashtanga Yoga is not used, but asana, pranayama, the techniques of asana and pranayama, the techniques of realization, where you reach, how you reach, or what are the ways through which we can come out, or what are the problems because of which we are not in yoga. Same to same, same to same. सिर्फ थोड़ी भाषा बदल दी है, बाकी हमारे प्रोजेक्ट की तरह ही कट पेस्ट कॉपी ऐसे ही लगे यार, वेदों में जो है वही तो भगवद गीता में लिखा है, जो पतंजलि योग सूत्र में वही पे है। हाँ, शब्द बदल दिए है वही। क्यों? स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट बाय डिफरेंट ऋषिज, राइट? How they practice, how they understood, that way they have put it there. And so that is what is Bhagavad Gita. So our style of yoga, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाला योगा, कि योग स्टेट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें वैराग्य करना चाहिए, हमें ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए. So वो वाला सारी बातें is given in Upanishad, in Bhagavad Gita. Why? Because Bhagavad Gita is nothing else but Yoga Shastra. That is what is very specifically mentioned over there. That actually speaking, Ved को Yoga Shastra कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन Ved Yoga Shastra है. हाँ, Yoga Shastra को Ved, क्योंकि Ved में से योग आया है. Correct? Yes. तो Upanishad में भी कहने की जरूरत नहीं है. हाँ, so when simplified, Brahma Sutra, फिर उसके बाद का उपनिषद और उसके बाद का भगवद गीता, तो जो नीचे नीचे आ जाता है वो लिखते हैं ना कि हम यहाँ से आए, हम वहां से आए, हम वहां से आए, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन, राइट? एंड सो in Bhagavad Gita it is very much written that it is Upanishad, and that's why it is Shruti.
Upanishads or Vedic scripture is known as Shruti. What is Smriti? Memory. यानी Memory. Smriti is memory. तो स्मृति ग्रंथ बोलेंगे तो हाँ. So With is the there memory. any difference? Shruti Granth and Smriti Granth? Yes, कोई बोल रहा था. श्रुति यानी कि सुन के गुरु शिष्य परंपरा से सुन के करते हैं वो श्रुति. तो स्मृति उसको हम याद मैडम रखते हैं. in their contemplative state. मैम मेमोरी मतलब ज्ञान से लिखा है. okay. श्रुति मतलब सुना हुआ. So हमारा जो भी स्क्रिप्चर है वैदिक मंत्र है. दीपक भाई बहुत शाने है. बोल दिया कि हाँ अभी हम लोग कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं. तो सब लोग ने किया भी. हम लोग ने हमेशा बताया है, मतलब यही बार बार बताया डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में, वेद किसी ने लिखा था? नहीं लिखा था. अपौरुष है, राइट. हाँ. और फिर सब लोगों ने जो प्रैक्टिस किया, फिर वो प्रैक्टिस किया, जो भी प्रैक्टिसेस थी वो पहले इकट्ठी हुई तो कैसे लिख करके इकट्ठी हुई थी. तो उपनिषद जब वेद व्यास जी ने इकट्ठे किए तब उन्होंने लिख करके इकट्ठे किए थे क्या? उन्होंने सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कंपाइल किया तब लिख करके किया था क्या? उस वक्त भी लिखा हुआ नहीं था. तो कैसे याद रखा था कि ये सारा मंत्र है, ये सारे संहिता है, ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, अथर्ववेद है. वी ऑलवेज विजुअलाइज कि हाँ ये नोट्स बना करके करके एक चैप्टराइजेशन किया. नो, इट इज व्हाट ही प्रिपेयर्ड पीपल and so they remembered it. So the complete knowledge of Yoga Veda, which was saved or which was treasured, accumulated, it was accumulated in which form? Memory form. The songs, hymns, knowledge, which is always heard. It was not written. And so complete Veda and all the scriptures which are connected to Veda, directly coming under Veda, including Prasthanatrayi, all are known as what? Shruti. And then, after many centuries, after Veda Vyasi also, all that rishis who taught their students. Okay, so how these rishis have come out with some notes. जब वो लिखने का वगैरह शुरू हो गया था तो उनके जो स्मृति में थे उनमें से उसने दिया. So, is स्मृति includes everything as it is? No. Smriti is colored. How I understood. Sometimes it may not be 100% fact. Correct? Yeah. Or it is fact, but put it in a light way. तो झापड़ मारा ऐसा नहीं लिखा. इसके बदले में भगवान जी ने ऐसे किया है. उन्होंने कहा है ममई वांश जीव लोके जीव भूत, भूत मात्र बन के रहेगा, मेरा अंश है. तो गाली दी है वैसे तो. हम तो ये तो बोलते ममई वांश जीव लोको जीव भूत सनातन. कितनी दफे बोला है मूड. अभी मूरा बोला तो कितना अच्छा लगा. Correct? So like that. So when it comes to Smriti, it's simplified. It is further diluted. It is the fact, but it is diluted. It is the same milk. लेकिन हम हजम कर सके ना वैसे उसके अंदर पानी डालकर. लेकिन it is given by a particular rishi, one rishi or two rishi or a group of people. And so it is known as Smriti. So when Smriti and Shruti both are there, which is at higher level? Shruti. Because that is direct. That is Veda. And so we have different Parashara, Smriti,
So जितने ऋषिज है उतनी स्मृतियां हैं. Correct? And Shruti, when we talk about Veda, Upanishad, Brahma, Mantra, Brahmana, that is. And Shruti में अगर कुछ आता है और एक्स्ट्रा तो वो है भगवद गीता and Brahma Sutra. Correct? Okay. And so, this is the difference between Shruti and Smriti. And so, we have Veda is Shruti. And whatever Tantra, that is the highest knowledge, is equivalent to Veda. In fact, Veda came from that. Correct? So all that is. Today's Tantra is against Smriti or whatnot even. Correct? Originally is that. And so when we are talking about Bhagavad Gita, it is Smriti. Veda Vyasi ne thode saalon ke baad, no, Veda Vyasi is who? Chiranjeev. शिव जी के टाइम से अभी तक he is the standard person. Correct? And so he has given it. And so Bhagavad Gita is Shruti. Bhagavad Gita is Upanishad. Bhagavad Gita therefore is Shastra. And Bhagavad Gita is also Yoga Shastra. Why Yoga Shastra? Because it helps us to realize I am pure consciousness. It helps us to realize I am Brahman. It helps us to realize Kevala. It helps us to reach to the Samadhi Avastha. Through all that paths which is given in Upanishad, which is given in Veda. All that paths to realize that I am one and only one. I am in yoga. And so all these names are attached to Bhagavad Gita. So मेरा वाला पिंक, मेरा वाला योगा, वो भगवद गीता में है, very much है. उपनिषद में, वेद में है, okay? तो उपनिषद में होगा. भगवद गीता उपनिषद यहाँ है, तो फिर मेरा वाला योगा भगवद गीता में है. A is equal to B is equal to C. Therefore, A is equal to C, right? And that is the logic is. So, and Veda Vyasi himself has mentioned it is a Yoga Shastra, it is Upanishad, and so you can check it out. You will find each and every understanding of your yoga into Bhagavad Gita. How many yogas are there? Innumerable. Innumerable paths given in Tantra, in Veda, in Upanishad, and so innumerable paths are given in Bhagavad Gita also. Rishi Patanjali has given innumerable path, yes or no? But all these people, they do a very helpful thing for us. Innumerable things may be, वो पिंक का भी शेड्स होते हैं, ग्रे के भी शेड्स होते हैं, but all that comes into a main groups, correct? And so there are innumerable yoga, but it is been put into the brackets or the major parts. So anything and everything related to the comes under that only, correct? And so to understand, because we can understand these four styles more. For us, these are the major understandings. Generally, people are either having, mindset of knowledge, ज्ञान, or mindset of मेरे को ज्ञान व्यान समझ में नहीं आता, मैं तो करती हूँ. I just do it. कर्म, कर्मकांड, क्रियाकांड और कर्मकांड और क्रियाकांड और knowledge, ज्ञानकांड. What is the third part then? When I am doing karma, why am I doing karma? तो कैसे करना, क्यों करना? Either you need knowledge or I don't know anything. I do it whatever way I can do it because he told me do it. मुझे नहीं आता है कैसे करना, लेकिन उन्होंने बोला करो तो करो. So I do it with what? Faith. And so we have generally three major paths. One is Jnana Yoga, other is Karma Yoga, and another is Bhakti Yoga. And the fourth major part from this comes is Jnana Yoga also leads to that. Karma Yoga also leads to that. Bhakti Yoga also leads to that. And that path is known as Raja Yoga.
all that part. So generally, there are people like us who has not done much into Vedanta, Upanishads. We have not done Jnana Marga more. We have not. We are into karma, but we are not used karma. मतलब कर्म का सिद्धांत and क्रियाकांड और पूरा मीमांसा पढ़ करके कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि मीमांसा में दिया गया है कि रोज सुबह उठ करके हवन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो आर वी ऑल डूइंग दैट? वेरी फ्यू ऑफ अस, एंड वी आर डूइंग इट नॉट इवन 1, फॉरगेट अबाउट 1%, 0.0000001% भी कहीं कर रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं है। करेक्ट? हाँ, सो हम लोग कर्मकांडी में नहीं आते हैं, हम लोग नहीं ही आ सकते हैं कर्मकांडी, एंड सो वी आर नॉट स्ट्रांगली फॉलोइंग द पाथ ऑफ कर्म। अभी हम लोग को उसमें से कुछ भी नहीं आता है, बट हम लोग क्या करते हैं? आसन प्राणायाम करने लगे हैं। तो आसन करना वो मेरा कर्म है। क्यों आसन करना? वो मेरा ज्ञान है। सब ज्ञान को, कर्म को यहाँ पे हमारे ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर। तो हम लोग सीधे घुसे हैं राजयोग में, पर आर वी एन राजयोग? नो, हम राजयोग के एकदम लोअर स्टेज में, जहाँ पे ज्ञान, कर्म एंड भक्ति में घूम रहे हैं, वो लेवल पे है। हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हर एक के लिए जगह है। And so we have majorly our rishis, and then later on, people, and this, especially Vivekananda, in that time, very recent period, contemporary period, when we are practicing, and then we see, oh हाँ, जिसको मैं ये समझती हूँ ना, वो तो भगवद गीता में भी दिया है, वो यहाँ पे भी दिया है, वो वहां पे भी दिया है। So then Vivekananda ji has clarified in Bhagavad Gita, we have Jnana Yoga, we have Karma Yoga, we have Bhakti Yoga, and we have Raja Yoga. Earlier, we never saw Bhagavad Gita into these compartments. It has come from our Vivekananda. Correct? And so then we realize, हाँ यार, जब कहीं पे भी देखो, जहां कहीं पे भी देखो, सब लोग ऐसे ही है। इधर वो लोग ज्ञानी मार्गी होते हैं, या तो कर्म मार्गी होते हैं, या तो भक्ति मार्गी होते हैं, या तो फिर हमारी तरह हठ योगा की तरफ जाकर के कुंडलिनी तरफ जाना और वो वाला कोशिश करते हैं। एंड सो वी ट्राई टू सी कहाँ पे योगा है वेदों में, वी ट्राई टू सी फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिंहावलोकन, मैंने कहा ना, हम हमारे से हम आगे देखते हैं, कहाँ कैसे था, हाँ जो मैं समझती हूँ वो वहां पे था, वहां पे था, वहां पे था। हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग हम वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, राइट? And so from that point of view, Bhagavad Gita includes all possible yoga. Mind well, remember that. But what major understanding about yoga is for us is Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Raja Yoga. Is there in yoga? Is there in Bhagavad Gita? Yes, very much. And that's why yoga, Bhagavad Gita is Yoga Shastra. It is Upanishad also, because it is 1-to-1. Given by Lord Shiva, Lord Krishna to the Arjuna, who is Arjuna, our representative. So the knowledge finally came to us. So what is Jnana Yoga of Bhagavad Gita? Yes, what is Bhagavad Gita? It's Gita. It is a song. For that matter, all the Shruti, all the Vedic scripture is Gita. गाए जाने वाले, correct? All our scriptures we can sing. It is written in meter, छंद में लिखे गए हैं, अलग अलग छंद में, और उसको अलग अलग ढंग से गाए जाते। क्यों गीत में है? श्रुति है, लिखे नहीं थे, याद रखे थे। कौन सी चीजों में याद रख सकते हैं? जो लयबद्ध हो, तालबद्ध हो, गाई गई हो, करेक्ट? इसीलिए आज तक हमारा स्क्रिप्चर टिका है, बाकी के स्क्रिप्चर नहीं टिक पाए। हम टिक पाए, उसका कारण ये है कि हमारे सारे स्क्रिप्चर सॉन्ग गेय है, गान है, डिवाइन सॉन्ग, एंड दैट इज व्हाट इज भगवद गीता। भगवत डिविनिटी, भगवान हिमसेल्फ, द हायर रियलिटी, यूनिवर्सल पर्सनालिटी सिंग दिस सॉन्ग, gave this knowledge in a flow, in the rhythm, so that we can understand and digest. फ्रस्टियां नहीं मोरा, इतना लेक्चर झाड़ो, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को वगैरह, लेकिन कौन सा याद रहेगा अभी?
ये वाले गाने के लिए मेरे को 2-3 लोगों ने बोला था कि मैम 2-3 साल से नहीं ले रही थी, बहुत ही पहले फर्स्ट ईयर में शायद लिया था, फिर मैं पता नहीं क्यों भूल गई थी। ओके, तो फिर उन्होंने बोला कि यू वॉन्ट बिलीव, पूरा दिन ये गाया। मैंने बोला दिस इज व्हाट द सॉन्ग इज, एवरी टाइम इट रिमाइंडेड यू, प्लीज फ्रस्ट्रेट मत होना। बोले हाँ वही वही, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था तो बार बार याद आता था। मैंने बोला ठीक है, करेक्ट, व्हेन इट इज सॉन्ग it stays with you, to connect with it. And that is what is our Bhagavad Gita is, given by the highest personality, supreme power, so that we can be supreme power very soon if we follow that. So that is Bhagavad Gita. And so what is the path of Bhagavad Gita? All that 4 paths. है ना, विवेकानंद का वो जो मैंने डायलॉग कहा था, मतलब वो अपने, we started that, that the way towards Godhood, towards God is passing through that, narrow passages of purity and all. Please remember all that things, right? Because this is very beautifully, it is given by Swami Vivekananda and all. And so major 4 parts, तुन्ने मतिर बिना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। और उसमें से ज्ञान योग, रीचिंग योगत्व through knowledge. Which knowledge? Highest knowledge, ultimate knowledge, knowledge about the self. What knowledge? कौन सा ज्ञान, क्या ज्ञान? यही ज्ञान, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है. This is what is Vedanta. This is what is Upanishad. This is what is the ultimate knowledge. What is the whole world is nothing else but Brahman, 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 Brahman itself. Where is Brahman? Where is Brahman? Is not. Where Brahman is not. Everywhere. अभी मैं अभी नासिक गई थी ना, तो स्वामी सत्यानंद जी का हम लोगों को छोटा छोटा वो उनके लेक्चर्स का वो पार्ट्स दिखाए थे. तो इन दैट रिलेटेड टू ब्रह्मन ही मेंशन कि दरिया के पानी में नमक कहाँ है, कहाँ नहीं है, बूंद बूंद में नमक है. एग्जैक्टली लाइक दैट, एवरीवेयर एवरीथिंग इज ब्रह्मन. सर्वत्र ब्रह्म दर्शन. सर्वत्रम खलु इदम ब्रह्मन. वॉट एवर आई कैन सी, एवरीवेयर भगवान ब्रह्मन ही है. एंड सो दिस प्योर कॉन्शियसनेस, इफ इट इज एवरीवेयर, it is in you, it is in me, it is in everything. Can anything be unreal? No, everything is real. So if I am Brahman, you are also Brahman. What is the difference between you and me? Why am I not able to recognize myself as Brahman, and why am I not able to recognize you as a Brahman? Because our Brahman, our pure consciousness is covered or is in the wall. Either मठाकाश, बिल्डिंग के अंदर का, और बॉडी के अंदर का देहाकाश. So the pure consciousness, when this deha will not be there, beyond this deha is one with the other. The moment building की दीवारें, घर की दीवारें हम तोड़ देते हैं या टूट जाती है, तो घर के अंदर का आकाश और घर के बाहर का आकाश becomes one, exactly like that. When this body will not be there, the wall of body will not be there, the Brahman within me and Brahman within you becomes without wall, will be one. This is what is understanding. This is what is the highest knowledge. How can we get this knowledge? All the knowledge comes from Veda. Correct? So by listening to Veda. So what is the process of Jnana Yoga? The process of Jnana Yoga is simple. Shravanam. Every day listen to that. I am perfect. Purnamada Purnamidam. Every day when we listen, every day when we sing, one fine day we realize, हाँ यार सच्ची में
क्यों डरती हूँ फालतू वाली एग्जाम से? इट टेक्स टाइम, दैट यूरेका मोमेंट टेक्स टाइम। वो आर्किमिडीज था ना वो, हाँ, उसको यूरेका मोमेंट कब आया था? न्यूटन को यूरेका मोमेंट कब आया था? पहला ही एप्पल खाया था तब थोड़ा आया था, करेक्ट? सालों लग जाते। हाँ ठीक है ना, अपने तो कहाँ जल्दी है। करेक्ट, हमारे पास काफी दिन बाकी है अभी तो, राइट? And so this is how we understand that unpure consciousness by Shravanam. This Shravana will not directly lead to realization. Somewhere or the other, the second stage comes, Sachi mein, am I that pure consciousness? And so manana starts, thinking starts, reflection starts, and that reflection slowly lead to conviction, connecting to that truth. And then I start realizing I am the truth. That is known as Nididhyasanam. And so this, Shravanam, Mananam, Nididhyasan wali jo series hai, how it starts, Tattvamasi, that is what the Shravana, that तू वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो हम अभी हमेशा तू केवल तक जा सकता है, रियलाइज कर सकता है प्योर कॉन्शियस, दिस इज अवर श्रवण। कैसे करेंगे सच्ची में, हकीकत में? लेकिन मैं तो ये सब में क्योस में उलझ जाता हूँ। हाँ, लेकिन कभी यहाँ पे हुआ, कभी वहां पे हुआ, सो लाइक दैट different reflections, manana helps us to go higher, and then one find it, yes, this particular stage I realize, and I can stay that place, that understanding becomes like, I know it, what sugar is, मुझे मालूम है, आता है कि नहीं आता है. Yeah, that conviction, when it comes, that is the stage of Nididhyasanam. And so Tattvamasi, what that pure consciousness is with me, and that is what is, the understanding, prajna, which is helping you to know about self, is yourself, or the Atma Tattva in you is yourself. And so then slowly come to know that I am Atma Brahman. This, I am Atma, I am that Atma Tattva. I am not Mana, Buddhi, Chitta, Ahankar, but that Atma Tattva. And so Atma Tattva is Brahman, and that Atma Tattva, if I am, then I am that. Aham, that Brahman, your consciousness, that realization comes. And so the path is Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. It leads to the highest samam gunam of life, Kevala or Nirvikalpaka Samadhi or Brahman Avasya, where we are Purna. It is the path of Jnana, knowledge, right knowledge, true knowledge. Through that we are reaching the state of Yoga, Yogatva, Samadhi Avastha, realization that I am pure consciousness. And so it is path of what? Vairagya. Correct? It is the path of Vairagya. Why Vairagya? Because if I am connecting to everything around me, holding on to everything around me, will I ever be able to go beyond that? I will not be. And so I have to let go of. I have to develop detachment. That's why it is the path of Vairagya, path of Sannyasa, where I am coming out of all the kamyanam, and karmanam, nyasa, because karma, then karma phala. And then keep missing and missing. And so kam and karma. Desire hi nahi hai, to no karma, so no phala. And so I can be free. And so that is the path of Jnana Yoga. And the same way we have the path of Karma Yoga. What is Karma Yoga? Through karma, through right way of doing karma, we realize ourselves as pure consciousness. What is the right way of doing karma? What is right way of doing karma? Without any bondages. Without any attachment. हम लोग ने एक वो जोक दिया था, जोक कहा था, कौन सा वाला? हाँ, वो कौन सा वाला था कि which male leads you to freedom? Which email leads you to freedom? That email which is coming without attachment. If attachment will be there, it will bind. No desire, no attachment, so we can be free. Correct?
And so whenever we are doing karma either as an instrument, then I am pen, I am knife. The person who is using me, whatever is the purpose of that person, that person's karma I am. It is not my karma. When we come to know that, so I'm just an instrument, I'm just the thing. And so I have no purpose, I have no desire. And so karma will not come to me. Or I am doing karma with the understanding of that yagniya karya. We all are doing it together. Either I'm an instrument or I am doing it together. हम लोग ने सबने किया है तो सबका फल है, फिर सबको जितना जितना देना है वो मिलेगा. I am not the owner of this world. Aham na karta. Who is the karta? Who is the boss? Who is the employer? Hari karta or Guru karta. Guru karta hi kevalam, Hari karta hi kevalam. If I am not karta, if I am not the doer, the karma phala will not come to me. कर्तापना छोड़ो, फ्रूट भी अपने आप छूट जाए. और मैं करता हो भी सकता हूं क्या? Am I so powerful? करता कौन हो सकता है? कुछ भी होता है किसके शक्ति से होता है? अगर मेरे हाथ से कुछ होता है लेकिन वो उसके अंदर भी पावर किसका है? मन का है, बुद्धि का है, तो उसके पीछे जो आत्मा शक्ति है उसका, वही तो परमात्मा बोलते हैं, उसी को तो हम प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं. सो अल्टीमेटली एनर्जी है उसकी. तो हम लोग क्यों अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई मेरा फल मेरा फल? हक है क्या हमें फल का? नहीं. इसलिए कहा गया है कर्म पे ही तुम्हारा हक है, फल पे हक नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो एनर्जी ही नहीं. थोड़ा सा वो जेरोक्स वाला ला करके एक काम आपको दिया है तो उसमें ऐसे थोड़ी कह सकते कि मैंने पेपर लिखा था. नहीं ना, पेपर लिखने वाला अलग है, बाकी के सब लोग अलग होते हैं. हाँ, तो वैसे ही हुए माए मेरी शक्ति से काम होता है ना, प्योर कॉन्शियसनेस से होता है ना. मेरा हाथ उसमें कुछ करता है ना मेरी बुद्धि कुछ करती है. दे ऑल आर इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ऑल. छोटा छोटा उनका कंट्रीब्यूशन है, जितना जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना उतना सैलरी उनको मिलेगा, दैट्स ऑल. बाकी पूरा प्रॉफिट जाएगा किसको? प्योर कॉन्शियसनेस. तो व्हाई यू वांट टू बी अ डूअर? अगर कुछ करना ही है तो तू मेरे को काम सौंप, मैं करके आऊंगा. और जितना बड़ा काम सौंपेगा उतना बड़ा फायदा मेरा होगा. क्या फायदा होता है? इतनी बड़ी सैलरी मिलेगी, राइट? एंड दैट्स व्हाट आवर शंकराचार्य एंड ऑल आर डूइंग. All the rishis, they are working for whom? They are appointed by whom? The highest reality. So that is how, even though you are doing the karma, you are doing karma, but still you are not getting the phala. Or become so engrossed doing that work that you and work become one. Again, worship will not be there. If there is no doer, if there is no second, if there is no dvaita, kisko chipkega? And so any of this way you can come out of karma phala. The best karma phala, the best way of not going through karma phala is when we are doing karma without any personal motive, selfish motive. We are doing karma for bahujana hitaya, bahujana sukhaya. When we are doing it for samashti, सर्वेत्र सुखी रख. भगवान जी तो सबको खुश कर, सुखी रख, उसमें मेरा सुख आ जाता है. Like that. So when we are doing it for samashti, samashti has to provide the power, that is, so it's his problem. We are out without getting any trouble. Or, most important is, whatever karma I am doing it, भगवान जी तेरे लिए कर रही. यद यद कर्म करोति तद अखिलम शंभो तवारावतम. भगवान जी आपको पाने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं कर रहा हूं. And so again it will not come to me. Or I am a common man. अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है, okay? अगर हिम्मत से मैंने दिल से पश्चाताप कर लिया है, will that सजा again I have to go through? That punishment I have to go through? नहीं. करेक्ट? पश्चाताप.
करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वम् एतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। एवरी डे क्लींस ऑल योर कर्मा। कैसे? भगवान जी कहीं पे मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने किया ऐसा हुआ है, प्लीज माफ कर। सही दिल से मांग लिया, पश्चाताप कर लिया, सारे कर्म छोड़ दिए, एंड तो बैंक अकाउंट खाली वापस, नो बैलेंस, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू all these systems our scriptures has given so that our slate remains clean, we don't get bounded by any karma. हमारे क्लास में से कोई एक दो दफे सवाल आए थे कि भाई ये बंधन क्यों शुरू हुआ, बंधन कोई शुरू हुआ क्या, बंधन भगवान जी ने क्यों शुरू किया? भगवान जी ने बंधन कोई शुरू नहीं किए, वो जो बंधन शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी एस्टैब्लिश राइट अंडरस्टैंडिंग, नो बंधन एट ऑल, वी आर एट दिस मोमेंट वी आर फ्री। द मोमेंट वी कम आउट ऑफ द स्वप्न अवस्था, we don't have to go through that. Exactly like that, the moment we come out of wrong knowledge, establish in right knowledge in vidya, we are free. And so right way of doing karma, and how to do right way, what is the right way of doing karma? पूरा कर्म मीमांसा दिया गया है, that is what the पूर्व मीमांसा is, कर्म मीमांसा, it is कर्म कांड, कैसे कर्म करने का कि आप फिर भी बंधे नहीं, कैसे कमाई करने की इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े, वो सिस्टम है ना। एग्जैक्टली वैसे ही कर्मकांड में पूरा दिया गया कि कैसे कर्म करने का कि फिर भी बंधे नहीं। And all of them, they were working like that, and nobody was bounded, right? They were always free. And that is the path of karma. And then we have a very beautiful, very interesting path of bhakti. What is bhakti? Bhakti is worshipping system. What is worshipping system? To whom you worship? किसकी हम ऐसी बड़ाई कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं? उसकी जिसको हम प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, टूटा फूटा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा प्यार है किसी के ऊपर तो हमारे लिए वो बेस्ट है। मेरा बच्चा सबसे बेस्ट है, क्यों? बिकॉज आई लव। So what is the only condition or what is the base foundation of bhakti? Foundation of bhakti is love. And we all are lucky. We all have love. We have understood love. We get love. We give love. As a human being, we all are lucky to get this. And so we can connect to bhakti marg easily. What is bhakti? Bhakti is to be one. Bhakta. Bhakta is that who is united, who is one, who is not vibhakta, who is not separate. From whom? From Almighty. तो मैं अभी कौन हूँ? प्योर कॉन्शियसनेस। मैं प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हूँ, होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आप को कनेक्टेड प्योर कॉन्शियसनेस के साथ समझते हैं? नहीं समझते। हम किसके साथ कनेक्टेड समझते हैं? वर्ल्ड के साथ। तो हम प्योर कॉन्शियसनेस से भक्त है? नो, हम प्योर कॉन्शियसनेस से विभक्त है। हम किससे भक्त है? किससे यूनियन में, किससे कनेक्टेड है? वर्ल्ड के साथ। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स टू वर्ल्ड। व्हाट इज भक्ति मार्ग? आइडेंटिफाई योरसेल्फ, connect yourself, unite yourself with the pure consciousness। और वही प्योर कॉन्शियसनेस को, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस करें तो प्यार कैसे करेंगे? प्यार करने के लिए हमें नाम चाहिए, प्यार करने के लिए हमें आकार चाहिए, फॉर्म चाहिए, और इसीलिए प्योर कॉन्शियसनेस ब्रह्मन को, निर्गुण निराकार तत्व को हमने सगुण साकार ईश्वर बनाया, सो दैट वी कैन लव। उसके पास आके रो सके, उसके साथ हम झगड़ा कर सकते हैं, उससे हम मांग सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि भाई तेरे लिए, तेरे साथ में, हमें इसमें से आगे निकाल। हमें एक आधार चाहिए, राइट? एंड वो आधार हमारे लिए ईश्वर है। इन भक्ति में हु इज ईश्वर है? यस, इट इज निर्गुण निराकार। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी ब्रॉट हिम डाउन टू सगुण साकार। So with Maya it is Ishvara, without Maya it is pure Brahman, nothing else. How can we connect? To connect,
We have a very simple process. श्रवणम, जो ज्ञान मार्ग में हमने सीखा, हमें we always start the love by श्रवण, then मनन, नहीं वो ज्ञान मार्ग का है, तो कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णुर, श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। मेरे से वापस वहां पे श्रवण बोला गया था। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। दिस इज द सीढ़िया हाउ टू डेवलप लव फॉर ऑलमाइटी। तो कौन है? हाईएस्ट रियलिटी, वन एंड ओनली वन। अगर प्यार करना है तो बेस्ट से करेंगे, क्यों? ही कैन लुक आफ्टर अस एवरीवे। और फिर उसके बाद में एग्जाम में उसके साथ कनेक्ट होंगे, वो जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे। फिर वो मेरा नन ऑफ माई बिजनेस, मैं तेरा काम कर रही हूँ तो मेरे को संभालने की जवाबदारी तुम्हारी, टीए डीए ये सब तेरे को देने का, अपने तो काम करेंगे। तो वो देता है, क्यों? वो शब्द का पक्का है, क्योंकि वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, omnipotent, omnipower, correct? And so he does his work best. What we are supposed to do our best, जो हम कर सकते। हमारा बेस्ट क्या है? उसको एकदम अच्छे से प्यार करो, या तो उससे पकड़ करके रखो, उससे कनेक्ट रहो। दैट इज व्हाट इज भक्ति योगा ऑल अबाउट। All we have, innumerable examples, where with this strong faith people have realized, उनको ना तो कोई ज्ञान था और ना तो कोई कर्म करते थे। वो नॉर्मल रोज का खाना बनाते थे, या तो रोज का मटका बनाते थे, या रोज का ईंट बनाते थे, जो भी करते थे वो सब वही करते थे, but still they all realized. Why? Because in all that things they remain connected to Almighty. ये वाला हमारा प्यार कैसे रह सकता है? या तो ये वाला प्यार ये श्रवणम मननम से तो होता है। So what is this true love, highest love? And that is what, or what is bhakti that has been described by Narada ji और मधुसूदन सरस्वती जी, या तो शांडिल्य मुनि जी, they all are experts. Okay? And so, धृते चित्ते प्रविष्टायाम गोविंदाकारता स्थिरा। मुझे क्या करना है? कैसे वो दृढ़ प्रेम मेरा होगा? तो मेरा मन जब शुद्ध होगा, उसमें प्रविष्टायाम, गोविंद का आकार, जब मेरा मन एकदम शांत है, एकदम क्लीन है, एकदम शुद्ध है, तो कौला कौला एकदम फ्रेश है, उसमें जो भी आकार रह गया, एंड फिर स्थित हो जाता है, तू ही रे। फिर कुछ भी आए हमें वही दिखेगा, क्यों? Because उनकी छवि एकदम स्ट्रॉन्ग बनाई है। And that is what is the process of bhakti. And so Narad ji says that how can you develop this love? So what is the process of bhakti? तो बोलेगे सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च भक्ति परम प्रेम है, हाईएस्ट लव, सर्वोत्कृष्ट लव, सर्वोच्च लव towards the highest reality. एंड अमृत स्वरूप, जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये सर्वोच्च प्रेम कैसा होता है? सर्वोच्च प्रेम और हाईएस्ट लव और अकल्ट लव, एकदम छुई मुई से एकदम शुद्ध प्यार कैसा होता है? हाँ, तो वो वाला गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। These are the characteristics of Shuddha love, of highest love, highest प्रेम, सर्वोत्कृष्ट प्रेम। भगवान जी खुद हमें ऐसा प्यार करते हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनि हमें ऐसा प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव। इफ इट इज कंडीशनल, इट कैन नॉट बी लव, राइट? शुद्ध प्रेम में कभी बार्गेन नहीं होता है, शुद्ध प्रेम में कभी कोई कंडीशंस नहीं, इट इज ऑलवेज ओपन, कंप्लीट, 100%, पूरा देने की इच्छा, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर भगवान जी इज गिविंग, एवरीथिंग इट इज, he has shown that love in Bhagavad Gita everywhere, and he has told us how can you be me? First start being mine. सबका होकर के जीने से, हाँ, उसमें हम लोग टुकड़े में बटे हुए होते हैं, राइट? उसके बदले में पहले बी हिज,
ना, हम लोग भी प्यार करते, यू बी माइन, वो बोलेगा नहीं मैं उसको भी चाहती हूँ, उसको भी चाहती हूँ, तो बोले हटा सावन की गड्ढा। करेक्ट, हमें भी वही बंदा चाहिए जो मेरा बन के रहे। और अगर हम हर एक जगह के हैं, हर एक के हैं, तो हम खुद के भी नहीं हो सकते, राइट? करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट कनेक्ट टू वन, ही सेड ममई वांशु, तू मेरा है, एंड देन मैया वेश्य मनो ये माम, तुम्हारा मन मेरे को, तू मेरा कैसे बन सकता है? ये तुम्हारे मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? वही तो मुझे दे देना, फिर मैं उसको साफ कर लूंगा, यू डोंट वरी। जितनी भी वृत्तियां है, मैयर पीता मनोबुद्धिर यो मत भक्त समय प्रिय, मई अर्पिता, मुझे अर्पित की हुई जिसकी मन और बुद्धि है, ये मन और बुद्धि हमको सबसे ज्यादा केओस क्रिएट करते हैं, चित्त वृत्ति उसी में है। वो बोलते हैं वो सारी वृत्तियों में तू मेरे को चिपका देना, है ना? दैट इज व्हाट इज ऑल अवर गोपीज डिड, है ना? माधव लियो रे माधव, अरे तुम माधव बेचने जा रहे हो कि माखन? उसको माखन में भी माधव ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक उसमें चित्त में, वृत्तियों में, सब जगह पे उन्होंने भगवान को बिठाया। And that is what is भक्ता। भक्ता इज भगवान से जुड़ा हुआ, तो जहां पे भी देखे उसको कौन दिखता है? हाँ, हम प्यार में होते हैं तो हमें कौन दिखता है? हमारे बिल्ला बड़े भी राइट, वो उसकी जैसे चलता है, वो उसकी जैसे बोलता है, ओ एग्जैक्टली वैसे। क्यों? वो है वहां पे नहीं, वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो है वहां पे। दिस इज व्हाट भक्ति इज, एंड व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी कनेक्ट टू दैट, व्हेन वी डेवलप दिस पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ लव, we don't have to be worried about, because we are lifted up. भगवान जी ने पूरे भगवद गीता में अपने प्यार से उन्होंने ये भगवद गीता दी हुई है, इसलिए उन्होंने बताया है कि कैसे मेरे जैसे बन सकते हो, या तो कौन मेरे जैसा है, या तो मुझे कैसे पा सकते हो। तो 12th चैप्टर है, 2nd चैप्टर है, स्थित प्रज्ञा दर्शन में है, 12th चैप्टर में है, और 16th चैप्टर में देवासुर संपत्ति विभाग योग में है कि काम, क्रोध, दम, क्षमा, ये सब क्वालिटीज तुम लाओ, और जो आसुरी वृत्तिज है वो छोड़ो। लो, यू आर भगवान, और यू आर मी, और यू आर कनेक्टेड टू मी, यू कैन मैरी मी, एंड देन दैट इज व्हाट द लास्ट सीढ़ी ऑफ आत्मनिवेदनम। What is Atmanivedanam? My individuality is now no more there. I have become you. Me and you, we become one. So two individuals cannot be there, right? Prema Galiyati Sakadi. So both two different individuals become one. And it becomes the highest reality. And that is what the Atmanivedanam. And that is what the Paramochara. Usi ko kehte Madhura Bhakti. And everything which we see, we feel, we understand, we experience is nothing else but Madhura Bhakti, Madhura. And so this Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga leads to the highest one. And that is what is, we say, Raja Yoga. What is Raja Yoga? Raja Yoga is the king of every yoga. What is king? What is king? Royal path, supreme path, or highest path, or that last ultimate path, which has all the things together. So it talks about Jnana Yoga also, Karma Yoga also, Bhakti Yoga also. It culminates into that highest path, the last part of it. And that's why it is known as Raja Yoga. If Karma Yoga is Abhyasa, Jnana Yoga is Vairagya, Bhakti Yoga is Ishvara Pranidhana, then Raja Yoga is Abhyasa, Vairagya, Ishvara Pranidhana. Bhagavad Gita, why yoga? Bhagavad Gita is also yoga because what in Patanjali Yoga said, Abhyas, Vairagya, Abhyam, Tannirodha, that is what is in Bhagavad Gita also said, Abhyas and Vairagya ke dwara aap realization pa sakte ho. So it is going parallel, side by side, simultaneously. And that's why it is the yoga. When we are talking about Raja Yoga includes Hatha Yoga, Raja Yoga includes Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. Raja Yoga includes Kundalini Yoga, Kriya Yoga. Correct? So Yam and Yam, Asana, Pranayam, Pratyahar hi nahi. When we are doing, Swadhyaya or Vairagya, it is Jnana Yoga. When we are doing Abhyasa or Tapa, it is Karma Yoga. And when we are doing Ishvara Pranidhana, it is Bhakti Yoga. And then finally,
we realize the Kaivalya in Samadhi Avastha. How we reach to that Samadhi Avastha? So either by Nadanusandhana, Hamari andar ka Kundalini ka, step by step when we are going higher, when we are balancing her and her. So that opens up that Sushumna Marga for us. And when we pass through all that, chakras, we reach to the highest one, above Ajna Chakra. And that is the abode of pure consciousness with Shakti together in union. And that is what is the Raja Yoga, the kingdom of pure consciousness, being in bliss forever. That is what the Kaivalya is all about. May we reach to this Kaivalya through Raja Yoga or through the different yoga given in Bhagavad Gita, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Raja Yoga. And we will have 10 minutes break, and then we will meet after 15 minutes. And then we'll do Jainism, Buddhism, wo chota chota hai. And then finally our Ishvara and all other topics. Done? So it's almost 11 o'clock. 11:15 we will start. 11:15? Exactly 11:15 we will be back. Nama, thank you so much for a time being, stop the recording. Miraji. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Just pause. Remember to start it once again. Yeah, Okay. sure. Right sure. now, pause Thank it. you. Okay. Nama Nama, ma'am. Nama. Thank you so much. So when we are talking about Veda, Vedic Parampara, Shruti, Smriti and all, the knowledge of Veda is of course divided into 4 Veda. And that has been established and that is coming to us till Purana. It is Vedic literature. Now this complete knowledge of Veda, it is there with us. That complete understanding about self. The complete understanding about Darshana Shastra. When we are talking about Darshana Shastra. So that is been then compartmentalized into Shada Darshana, 3 Astika Darshana, 3 Nastika Darshana. So in that, we have already seen Veda and Upanishad. When we saw that time, we have seen Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. And then we saw our Nyaya Vaisheshika, not in detail this year, but earlier. And Nyaya, this argumentation or Tarka, that is all the system includes. All means whether it is Judaism, means Westerners or Easterners, correct? So the importance of Nyaya Shastra is everywhere there. And then Sankhya and Yoga, that we are doing as it is in detail, correct? So Astika Darshana has been taken care of. When we are talking about Bhagavad Gita and also it comes, all of them comes under Astika Darshana. From Nastika Darshana, we have 3 main darshanas or systems. That is, one is Charvaka, but they do not believe in any scriptures. They do not believe in any spirituality. That the spirit within you is permanent. Correct? They are not believing in that. But Jainism and Buddhism, they are believing in the same system. And so when we are trying to connect to whether yoga is accepted, whether yoga, the yoga which we understand yoga, whether it is Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga type wala yoga, Abhyas Vairagya Ishwar Pranidhan wala yoga, Tapaswadhyaya Ishwar Pranidhan wala yoga, ya to this Ashtanga Yoga wala yoga, Yam Niyam Asana Pranayama wala yoga. Anything or similar to it is been practiced by Jainism or Buddhism or not. Or when we are talking about yoga, the process to realize ourselves. And yoga is the state that I am that pure consciousness. Whether this understanding, whether this meaning is been also experienced or explained by Jainism or Buddhism or not, that we are seeing when we are doing the comparative study. Correct? And so, when we are talking about Jainism, it is the complete darshana, though it is known as Nastika Darshana because it is not accepting the authority of Veda, but it is accepting the authority of Agama. So, come what may, they are not different. They are part of it. And that's why we have always included Jainism and Buddhism as our system.
Correct? And that's why when we are talking about Jaina or Buddhist people, or for that matter, our Punjab is Sikh. So the origin is this. इसी में से बाहर आया है. And so we should call everyone as Hindu only. Correct? Buddhist people also are Hindu. Jaina followers are also Hindu. And when we are talking about Hindu, the Hindu, it is what? Is it about the religion? No, it is not about the religion. It is the system who believes, or either पहले वो जो area था सिंधु नदी के किनारे वाला वो और that civilization जो वहां पे पनपी थी, और उसी में से जैसे हम सांख्यन योग को इंडिविजुअल स्कूल कहते हैं या तो स्वतंत्र स्कूल कहते हैं. करेक्ट? क्यों उसको स्वतंत्र स्कूल कहते? इट इज आस्तिक दर्शना. लेकिन उसका एक खास एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठा करके दे हैव गिवन द कंप्लीट पाथ. Exactly like that, Jainism, Buddhism, Sikh, and all other system is done. The small it is important point, but one part of that particular point they have picked up, and then they level up the Shastra over it. And so that is what is, Jainism also did, Buddhism also did, but that point is from where? That point is from Vedic Parampara only. Correct? And so they are not secluded or, separate. They all are connected only. And so when we are talking about Jainism, though it is known as or labeled, it's a very wrong label. I think, all the Jaina and Buddhist people should now, work hard and, say that, ye sare faltu label hatao hamare upar se. In fact, nowadays, we all are working to have one more label. Hum schedule hai, hum falana hai. Are why you want to just, cut off yourself from the origin? We should start to come to mainstream, right? We should do for that. And हम लोग जब भी कटे हैं ऐसे टुकड़ों में बटे हैं तभी उसका तो फायदा किसी और ने ही लिया है ना. और फिर अगर हम हिस्ट्री से नहीं समझेंगे तो फिर उसको तो फिर परेशान होना ही पड़ता है ना. We have to be then ready for the consequences. Any which ways. And so, even though label is Nastika Darshana, but it has all the qualities which is like Astika Darshana. Apart from, showing that we are not believing in Veda, but they are believing in Agama. So we are, for our studies, we have to keep in mind, we all are one. Okay, because Agama is also come from Shiva only. And that is gone to Parvati, and then all other, our Rishi Munis. And they have accumulated the Veda. So Veda has come from Agama. If you are saying I believe in Agama, so आप वही माई बाप को मानते हो जो माई बाप को Veda मानते हैं, right? Okay. But important thing, when we are comparing it to yoga, then Jainism and Buddhism both are exactly like yoga, are Shramana Margas. What is Shramana Marga? Shramana Marga is you have to shrama, you have to work hard for your own realization. That is what Agama says, that is what Veda says, that is what all the Shruti, all the scripture says. कि कोई कृपा नहीं करेंगे. भगवान की भी कृपा कब होती है? इवन भक्ति योग में हमने कहा कि भगवान कृपा करते हैं, लेकिन कब करते हैं भगवान कृपा? भगवान रास्ता बताते. करेक्ट? रास्ता बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर तो तू मेरे जैसा बनेगा. चलना किसको पड़ता है भाई? अर्जुन को भी रास्ता बताया. ओके, चला कि कौन? भगवान जी ने ऐसे कहा मैं लड़के देता हूं, तू बैठ जा, वैसे भी तू कोई काम का नहीं, चल. नहीं, उसको भी लग रहा था कि मैं तो कोई काम का नहीं हूं, लेकिन उसको बताया कि भाई तू तो बहुत काम का है. उसको उसका इंपॉर्टेंस समझाया और फिर उसको क्या कहा? अब कर तू क्या है वो भी तेरे को बताया, तू क्या कर सकता है वो भी तेरे को बताया, और अभी तू तेरा चूज कर क्या करना है, एंड देन अटेन दैट. करेक्ट? सो ही हैज शोन दैट पाथ. Higher reality always show us the path. That is what even our yoga is, GPS. All these are paths. Different yoga means what? Different paths to realize the reality, to realize the truth, the highest state. Okay. And so, whether it is yoga, whether it is Veda Marga, whether it is Yoga Marga, whether it is Jaina Marga, or whether it is Buddhism Marga, all of them are telling us what to do to realize ourselves.
what to do in the beginning looks like they all are saying something different. But then when we closely understand, then we come to know they are saying exactly the same thing, whether it is Veda, Upanishads, Shruti Parampara, that is Yoga Parampara, Patanjali Yoga Sutra wala, Jainism Parampara or Buddhism Parampara. So even sadhana remains the same. And so the system of Jainism, the Jaina Shabda came into existence from where? Jina. जी जीना नहीं, जीना Jina. हाँ यही ना, वो मैंने बोला था ना रीटा वाला Sorry. जीन. What is the meaning of jin? Means to conquer, Conqueror. जीतना. Okay, so it is the path of conquerors. It is a path to become winner. It is the path to become successor, to find the success. On what? On whom? On the other person? That is temporary. That is not important. Who can win over? If we want to win, then we have to win what? What the world around us is that the reality? What is the reality? Reality is I. Reality is my chitta. मेरे चित्त में अगर दुनिया बुरी है तो सारे लोग बुरे हैं ना, वही है, right? So I am giving reality to the world. What I think, what I feel, what I see, what I perceive, that is what is all over. So if I need to work, I need to work where? Outside or inside? On others or on self? On self. And that is what is the main purpose. If I want to conquer the whole world, then I don't have to go and fight with the whole world. Conquer the world, I have to conquer myself. सबकी जय से पहले खुद को जय करे, खुद को मास्टर करे. And खुद को मास्टर करने का path is known as Shramana Marga, which has been shown by Yoga, Jainism, Buddhism, and Veda equally same way. And so, according to Yoga or Buddha, what is the problem? Why am I suffering? Why am I suffering? Because of, sorry, Deepak bhai? वृत्ति वृत्ति, अज्ञान, और या तो अविद्या और अज्ञान, वो सब की वजह से. वो सब कहाँ है? बाहर है, अंदर है, अंदर है. मेरे अंदर अज्ञान है, मेरे में ज्ञान नहीं है राधा, और या तो मेरे पास रॉन्ग नॉलेज है, उसकी वजह से माय परसेप्शन इज रॉन्ग. एंड बिकॉज ऑफ मेरी दृष्टि गलत है, मैं सही समझ नहीं सकती हूँ, सही देख नहीं पा रही हूँ, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है. तो मुझे करना क्या है? वो दृष्टि को बदलना है. अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो ज्ञान लाना है. अगर रॉन्ग नॉलेज है तो रॉन्ग नॉलेज के बदले में राइट नॉलेज लाना है. दैट्स ऑल. एंड सो दैट इज व्हाट द पाथ इज गिवन, दैट टू conquer myself, I need to come out of all the negatives, my weaknesses. Raga, Dvesha, Abhinivesha, Pramana, Vikalpa, Viparyaya, और या तो कषायस, ये षडरिपुष. सो उसको निकालना वो जरूरी है. और उसको निकालने का कोई रास्ता है? हाँ है. तो कौन सा रास्ता है? तो जैनिज्म has said that work on yourself by having सम्यक ज्ञान. सम्यक ज्ञान, right knowledge. बराबर. सम्यक means what? valid, right, ultimate. Very right knowledge. Right knowledge. That will lead to right vision, samyak darshana. That samyak darshana, right understanding, right perspective, right outlook, right view, right reasoning will lead to right path, right character, samyak charitra. And so this understanding in consolidated way, in a very systematic way, is the way we said that Rishi Patanjali has given us, tak, 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 पूरा GPS दिया है. So वैसे जैनिज्म का GPS किसने दिया है? Yes, अभी थोड़ी देर पहले दीपक भाई ने बोला कि सारे गणधरों ने मिल करके रीराइट किया, लिखा, सिंप्लीफाई किया, लेकिन वो हमारी तरफ सिंप्लीफाइड पाथ में द लास्ट तीर्थंकर के थ्रू आया.
तो पहले के तीर्थंकरों धीरे 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 जोर जोर रास्ते पे उन्होंने प्रैक्टिस किया था, वो श्रुति परंपरा के उसमें था। एंड देन तीर्थंकर मतलब 24वें तीर्थंकर के बाद में बाकी सब गणधरों ने मिलकर के वो लिखा। जैसे हम कहते हैं कि ऋषियों ने मिलकर के वेदों को इकट्ठा करके और फिर वेदों को चारों में डिवाइड किया, वेद व्यास से लेकर के, और बाद में लिखा गया तो बहुत सालों के बाद में, बहुत सेंचुरीज के बाद में। करेक्ट? Okay, so they are believing in the Tirthankara parampara. So what is Tirthankara? Who are Tirthankaras? They are 24. And who was the first Tirthankara? Adinath. Adinath. Adinath is nothing Shabdev. else but for us, for our right understanding. Not just our understanding, it is our right understanding, it is pure consciousness. Adi of the whole universe. Origin of the whole universe. And he is supposed to be, he or it is, of course, the best, Uttama, Sarvattama, and that's why it was known as Rishabha, the best, Sarvattam. And so, whenever we are talking about this, Tirthankara, तो उनको तीर्थंकर नाम क्यों दिया गया था? So Because their presence was like in the Tirth. तीर्थ They are बना so है। so they were पवित्र। like तीर्थ। तीर्थ पवित्र। मतलब क्या है कि जहां जहां करके हम पवित्र होते हैं, जिसका वाइब्रेशंस इतना पावरफुल है, मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि हमें वो शुद्ध करता है, हमें वो पवित्र करता है। तो हमारे जितने भी तीर्थंकर है, they have reached to that level, they themselves they become the best, they become पवित्र। एंड जो भी हम लोग क्या करते हैं, कैसा भी पानी है लेकिन थोड़ा सा ऐसे गंगा जल छिड़क देते हैं तो फिर वो सब पवित्र हो जाता है। क्यों? बिकॉज गंगा जल हैज दैट पावर, दे आर लाइक तीर्थस, जिसका स्पर्श जिनको भी होता है वो सब शुद्ध बनने लगते हैं, पवित्र बनने लगते हैं, सच्चे रास्ते पे और अल्टीमेट पाथ पे चलने लगते हैं। एंड सो दैट इज व्हाट द तीर्थ, दे आर नॉट ओनली तीर्थ, वो हमें भी तीर्थ बनाए। All these gurus we have always mentioned about them, अभी आज वो वाले वो गुरु कौन और शिष्य कौन, आज वो डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन हमने भी हैव डन इट। सो गुरु, हम जब गुरु गोविंद दोनों खड़े वाला जो हम बोलते हैं, हम क्यों गुरु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, भगवान जी से भी ज्यादा? क्यों? क्योंकि वो पारसमणि के जैसा होता है। दिस सिमिली वी हैव डन दैट सिमिली आल्सो, दैट अदरवाइज क्या होता है कि पारसमणि सोने को लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु हम लोहे को सिर्फ सोना नहीं बनाते हैं, उसके जैसा और या तो उससे भी बेटर पारसमणि बनाते हैं। सो गुरु का स्थान इसलिए उससे हायर है, करेक्ट, क्योंकि वो हमें इतना परफेक्ट बनाते हैं, सिर्फ पारसमणि की जैसा नहीं है, उससे भी बेहतर है। सो व्हाट दे डू, वो अपने जैसा बनाते, पारसमणि दूसरा पारसमणि बनाता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। वो खुद तीर्थ है और दूसरों को भी तीर्थ बनाते हैं, तीर्थ के जैसे पवित्र बनाने की ताकत रखा करते हैं, वो है तीर्थ। तो उन्होंने जो पाथ दिया है, वो पाथ कौन सा पाथ है? पाथ टू बिकम जीना, पाथ टू बिकम कॉन्करर, इसीलिए उसको कहते हैं जैनिज्म। So what is the original path to conquer everything? If I will be having desires, if I'll be according to that desires, if I am doing the work karma, then I will be having karma phala. And if I'm having karma phala, so good karma, bad karma, punya karma, papa karma will be there, and punya karma, papa karma will be there. Then it will stuck to me, it will bind me. And then I will get into chakki piecing and piecing, janma marana, ananta phala, ananta dukha, वो लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो कहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा? डिजायर्स पे और कर्म पे। कैसे करेंगे? डिजायर्स को क्या करना पड़ेगा? छोड़ो। डिजायर्स मतलब राग द्वेष, छोड़ो। And so what path I need to start following? The path of sannyasa, giving up, living, let go, coming out of, knowing self
To know myself, I need to come out of everything which is non-self. Correct? And so that is the path of Vairagya or Jnana Marga, what we just now, in the first half of our class saw. Correct? Path of Vairagya. Viraga, no raga, no attachment, no desires. And that's why it is known as sannyasa. And if I have to give up everything, so then I'm not with the people, right? To know myself, do I need anything, anybody? No. And so I'm living my life as I am, as a wanderer. Correct? And so when I am a wanderer, and when I am able to go beyond karma and desires and all, तो मुझे खाना है, पीना है, ये चाहिए, वो चाहिए, फ्रिज चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना ये वाला कपड़ा चाहिए, वो तो धीरे धीरे सब चला जाएगा. कपड़ा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चला जाएगा. Because क्यों? Because I am not attached to even my body. Correct? That is the highest level of viraga. Vaitrushna, Guna Vaitrushna, which Rishi Patanjali talks about. That is what the highest level of viraga, highest level of vairagya, highest level of sannyasa, right? कि हम त्रिगुणों से हम परे जा रहे हैं, तो पूरी सृष्टि से परे जा रहे हैं, तो फिर अगर देह का भी भान नहीं है, देह के साथ भी अटैचमेंट नहीं है, तो कपड़े के ऊपर क्या अटैचमेंट रहेगा? खाना मिला नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? That is what the life of wanderer, that is what the life of people who are following the path of becoming conqueror, Jaina. And so the first system which came into existence was the path of Digambara. Was these wanderers were Rishabhadeva himself who has started it. He became, Nivritta. Nivritti Marga, we have seen the story. And so he accepted the path of Nivritti. After doing all his duty, he just gave up, being king. He gave up being with the society. He left like, Mukta, free bird in the world. And so, dire, he was not having clothes also. And so whosoever saw him, they realized or they thought that, yes, this is what the life is. We are free from every desires, everything, every bondages. Even kapde ka bhi bandhan nahi. And so that's why the word has come. Digambar, digche ambar jenu, dig hai, dig means dishao, जिसका वस्त्र है वो, मतलब उसको कोई चीज भी बांधती नहीं है, कोई भी चीज का कंपल्शन नहीं है. दे आर फ्री बर्ड, मुक्त विहार जो करते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ. प्योर कॉन्शियसनेस को ढकने की वगैरह की जरूरत नहीं होती है. अरे ओ पीके का वो डायलॉग था ना, वो अभी तो अचानक याद आया, वो दिगंबर की बात कर रहे हैं कि कौवा, डॉग, कैट, उन लोगों को, हम लोगों को वो लोग नंगा फील होता है, कैसे नंगे कैसे घूम रहे हैं? Do we feel anything? Not them, they तो don't feel only. Do we also feel anything? हमें कुछ भी नहीं होता. मेरे तो अरे कोई मेहमान आया, चलो मेरी डॉबी को, मेरे शिफू को कपड़े पहनाओ, कोई कैसा बोलेंगे क्या हुआ? It is very natural. That is what natural we all are actually. And forget about being Digambar or going on the higher path. In our earlier stages, was there any clothes? Was anybody ashamed of anything? No, it's natural. Because pure consciousness has no akar, has no bandhana. And so, original, इच्छाओं का वगैरह का भी बंधन नहीं है, तो कपड़े वगैरह का तो वो तो बहुत ही ग्रॉस है, वो तो सब निकल गए हैं. That is what is original. Okay. So, and then this realized soul, Rishabhadeva, when he was moving around, and that time one of the kings, he also accepted the system of Rishabhadeva. And so he was the first one who adopted this system of Jainism through him, correct? And so then the system of first came into existence was Digambarpan, and then Shvetambara, and then, people that come to
come together to understand and walk together higher level तक थोड़ा सा. Okay, so kindergarten, first standard, second standard, you know, उसमें ग्रुप में पढ़ाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है. पीएचडी लेवल के ग्रुप होते हैं क्या? ग्रुप स्टडी होती है क्या पीएचडी लेवल में? नहीं. Starting में we need to come together and study, or come together and follow the path, or come together and do sadhana at a lower level. And so that's what they have realized, that everybody is not reaching to straight away to Rishabhdev's level. How will they come to know about it? उनका श्रवणम मननम कहाँ पे होगा? तो श्रवणम मननम के लिए हमें मंदिर की जरूरत है, हमें देरासर की जरूरत है, हमें स्थानक की जरूरत है. And so then Deravasi and all the other system has come into existence. And so after many years of Tirthankaras, these all other systems came into existence. तो 24 तीर्थंकर हो जाने के बाद और 5, 10, 15 सेंचुरीज के बाद फिर वो लिखा गया कि वो लोग नॉन वैदिक है. या earlier Vedic, non-Vedic, their distinguish was also not there. Anyway, so the first one was Rishabhadev, then he has given the system, and that was been clarified by each and every Tirthankaras. And then, you know, Mahavir, Vardhaman, Mahavir is the name of 24th Tirthankara. Uske pehle Parshvanath the. Okay, 23rd one was that. Why he was known as Mahavira? Because that, you know, clarified path came from him, and he said that, you know, to be Veera or to be conqueror, you don't have to fight outside, you have to fight within. So बाहर fight करके जीतने वाला वीर खुद के ऊपर जीत पाने वाला महावीर कहलाता है. And so people started knowing him as Mahavira. Okay, and so the path of Jainism, as we mentioned, described by Tirthankaras, are Samyak Gyan, Samyak Darshana, and Samyak Charitrya. How to develop my Charitrya? How can I do right karma so that I will not get bounded? For that, I have to follow Samyak Jnana and Samyak Darshana. According to that, if I am following the scriptures, Agama Shastra, what is given in Samyak Jnana and Samyak Darshana, automatically I'll be becoming better. So what is given in that Samyak Darshana, Samyak Jnana, different type of Jnana, कैसे वो ज्ञान पाया जाता है, मति ज्ञान, ये level का, अलग-अलग level का, everything is given in that. Okay, and so when we are practicing that knowledge, then we realize that, you know, why I am getting bounded because of my wrong karma. So first stop wrong karma. Then right karma, okay. Then stop right karma also. So first, to stop wrong karma, what I need to follow discipline. And so that discipline, how I can develop my right state of mind? By following Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya. So following vratas, Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya is the path to develop right character. So if I am having right character, I will not be doing wrong. I will come out of wrong karmas, negative karmas, and then slowly I can come out of right karma also. And finally, I can overcome all the karmas. If no karma phala. No karma phala, no karma bandhana. No karma bandhana means what? I'm pure consciousness as it is, realized soul. How can I reach to that level? With knowledge. Which knowledge? One and only one knowledge. Highest knowledge, valid knowledge, Samyaka Gyan. That Samyaka Gyan, highest wala Gyan is known as Kevala Gyan. Only knowledge about only one and only one principle. Correct? And that's why in Jainism it is known as Kevala Jnana. Now when I'm following this, do I need anybody else? चल મને એકલા જતા डर लागे छे, मुझे अकेले जाते हुए ना मेरे को तकलीफ होते है. चलो दोनों होंगे ना तो मिल करके पहुंच जाएंगे. दो होकर मिलके कोई रियलाइजेशन के लिए पहुंचता है? नहीं, और भटक जाएंगे ना. चल ये देख के आते, चल वो देख के आते करते हुए. करेक्ट? एंड सो साधना का पाथ हमेशा एकला चलो रे होता है. करेक्ट?
क्योंकि खुद की साधना और दूसरे की साधना का लेवल कुछ भी कर लो अलग अलग ही होता है। इसलिए साधना का पाथ खुद का अकेले का होता है। when we are working on ourselves, knowing ourselves, then I have to walk alone, because this is the path of nivritti, path of path of vairagya, path of sannyas. तो संन्यास का वो झुंड नहीं करना होता है, करेक्ट, वो साधना में अकेले जाना होता है। एंड सो when I am so it is no self discipline. When I am disciplining myself, when I am trying to know myself, I don't need any other person. And so I come out of other people. And this becomes the path of, severe discipline. Okay. And that's why whenever we are talking about Jainism, they have very strong rules and regulations to follow. So whosoever decides to leave the world and follow the path of realization, the monks, sadhus, okay, so they are the people who are walking on this. तो उनके लिए कोई 19-20 नहीं चलता है, उनके लिए ये जो व्रत है वो महाव्रत है। वेल ऋषि पतंजलि ने तो हम सबके लिए महाव्रत ही कहा है, करेक्ट। वो महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, these are the universal principles, and so it should be practiced 100%. But here for the commoners 19-20 is allowed. It is vrata for them, correct. So and Jainism, it should be able to be practiced by everybody. That's why what they have done, that. How can you know the highest truth? Can you straight away connect to Rishabhadev? You may not be. Can you straight away connect to Mahavir also? You may not be. So what you can do to connect to the highest, you can start with the lowest. So जो भी आपको मदद करता है वो सबको प्रणाम, connect to them. And that's why the Naukar mantra, most simple mantra, simplest mantra, नमो अरिहंताणम, किसको, सबको नमन करना है। और सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? लोएस्ट से। साधु, साधु मीन्स व्हाट? जो साधना करता है, जो साधना चाहता है, जो सिद्ध बनना चाहता है, जो साध्य को पाना चाहता है। नमो, हाँ, तो वो साधु, साधु से ऊपर आचार्य, उपाचार्य, उपाचार्य से ऊपर आचार्य, आचार्य से के ऊपर सिद्ध, एंड सिद्ध के ऊपर अरिहंत। अरिहंत इज दैट स्टेज ऑफ realized people, गुणातीत। क्योंकि कोई पण गुण है सत्व रजस तमस तो लाइक्स डिसलाइक रहेगा ही, राइट। तो उससे भी आगे के लेवल पे पहुंच गए वो लोग अरिहंत बनते हैं। अरिहंत मीन्स नो अरि एट ऑल, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है, करेक्ट। हमेशा हमें अहिंसा, हम लोग बोलते हैं कि जैनिज्म में हम अहिंसा को बहुत ही मानते हैं। उसका कारण क्योंकि ये अरिहंत शब्द को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग ने पतंजलि योग सूत्र में देखा होगा कि अहिंसा पालने वाले जो भी एकदम पूर्णपणे अहिंसा का पालन करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अहिंसा? तत्सन्निधौ वैर त्याग। उसके आजू बाजू के लोगों का भी क्या हो जाता है? वैर त्याग। तो उनके अंदर भी वैर की भावना नहीं रहती। हमारे तीर्थंकरास आर लाइक दिस। हाँ, वो लोग अहिंसक है, ऑफ कोर्स। हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम कैसे बनने लगते हैं? तो सीधा अरिहंत बनने से बदले में क्या पाथ दिया है? वेरी सिंपल, वेरी सिस्टमेटिक। उनके सानिध्य में रहो, जिनके सानिध्य में रहना है उसको नमस्कार करो। सो नमस्कार इज व्हाट यू आर कनेक्टिंग, करेक्ट। नमस्कार का पूरा, so how beautifully they have given, and so they try to reach to unto the last lowest commonest person तक कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और इसलिए जैनिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू एवरीबडी। आप कोई भी सिस्टम अपना रहे हो, आप कोई भी लेवल पे हो, अहिंसा पालन कर रहे हो कि सत्य या कुछ भी, आप 1 अंश का पालन कर रहे हो या 100 अंश का पालन कर रहे हो, कहीं पे भी हो, बट यू आर राइट। हम लोगों ने वो जो एग्जाम्पल दिया ना, वैयाकरणी, पहला दिन है तो भी वैयाकरणी, पहला दिन है तो भी योगी हम अपने आप को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर ऑन दैट पाथ, एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज एटलीस्ट वी स्टार्टेड वॉकिंग। Yeah, from my place, I may not be able to see the truth 100% or correct, but at least I am able to see something. I'm connecting to something. And so my point of view may not be 100% true, but 1% true,
1% true. And so maybe I'm right. I may be wrong, but I may be right also, right? And because truth is multifaceted. That is the universal truth accepted by all the religions, all the spiritual systems, whether it is Vedic, whether it is Agama, or whether it is Judaistic or any other thing. Truth is multifaceted. And this truth is been accepted by Jainism. कि truth is multifaceted. जो भी एंगल से आप उसको देख रहे हैं, आपका point of view सही है. Multi-dimensional. Yes, truth is multi-dimensional, multifaceted, and you will definitely able to connect. Whether आप इसके तरफ से join कर रहे आप वो एक हाथी को 4 blind लोग देख रहे हैं या 5 blind लोग देख रहे हैं, जितने आपके पास एग्जाम्पल देने की ताकत है उतने लोग बढ़ा दो. करेक्ट? तो एक बोलता है कि पूंछ है, तो जो हाथी को पूंछ की तरह जानता है वो गलत है? 100% गलत नहीं है, 1% सही है. Just like that, whatever is your capacity to know the truth, from that point of view you are right. फिर धीरे धीरे आपकी आंख थोड़ी बेटर होती जाएगी, विजन बेटर होता जाएगा. You will be able to see the complete truth. Exactly like that. You will definitely reach to the Arihanta Pada slowly. And so you might be right. And that's why Jainism believes in Nayavada or Syadavada or Anekantavada. Because truth can be seen from Anek Ant. It has multifaceted, it has Aneka Anta. बहुत सारे अंत है. From any anta you can start. It is like that. हम लोग बचपन में वो करते थे ना, बहुत सारे ऐसे जलेबी गांठिया जैसा वो दिया हुआ था, और यहाँ पे एक सस्सा बैठा हुआ है, एक रैबिट बैठा है, उसको वो वहां पे उसके घर तक जाना है, कैसे जाएगा? ओके और फिर हम लोग ऐसे पेंसिल से ऐसे करके पहुंचते हैं. Exactly like that. There are so many ends. स्मार्ट लोगों ने बहुत सारे अलग अलग रास्ते, वो सारे रास्ते से हम एंड तक पहुंच ही पाते हैं. And that is what the truth of Jainism. How can we reach? What is the problem in the path of attaining the reality? My karma. And so what are we supposed to do? सम्यक ज्ञान से सम्यक दृष्टि डेवलप करो, सम्यक दृष्टि से सम्यक चरित्र डेवलप करो, अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य. So when we are practicing that, automatically I will be coming out of my karma. Because we are jiva and around us there is ajiva. Jiva and ajiva is coming together. And so because of that the karma happens. Then we have punya karma and we have papa karma. And so when we are getting the karma, then karma start coming and binding us. So karma ka kya usko kya bolte hai? Ashrava starts happening. Okay, and then it finally binds us. So what is okay? So what is our system? By practicing this what 5 ahimsa satya asteya, by developing samyak charitra, we should stop this. Okay, we should stop karma bandhana. Okay, so we should start samvara, and whatever karma is already there, make it very diluted, nirjara, and then finally attaining the liberation, moksha. And that is what the path of Jainism, attaining the highest. Okay, when we are practicing all these things, so as a common man, what I can practice with ahimsa satya asteya parigrah brahmacharya, with samyak gyan, samyak darshana, and samyak charitra, what else I can practice is maitri, karuna, mudita, upekshanam. And with that we attain the highest and reach to the kevala jnana avastha and reach to the siddhashila by overcoming all the kashayas and patience in our life. How can I practice cleansing of my mind? When I want to come out of karma, that is one system. When I'm coming out of the karma, and when I'm practicing this, ahimsa satya asteya parigrah, so I'm working on my mind, I'm concentrating. What is the problem? Why my chaotic mind is there? Because I don't see things as they are. I see things as I want. That creates the vrittis, that creates the karma. If I work on that,
I can overcome karma. And so in Jainism, later on, they have developed the system of Preksha meditation. What is Preksha? Seeing things in a better perspective, clear way. Pra-iksha. Pra means pragati ka pra, higher, better, clear. And so Preksha is clear, having clear vision. कि अगर ये गड़बड़ गड़बड़ काम करती रहूंगी तो कहाँ पहुंचूंगी? और बंधन है. I should have vision. If I am connecting to world, obviously I am going to get into more and more bandhana. Come out of to come out of bandhana, I need to come out of world. I need to come out of people's samsarga. I need to develop detachment. Correct? So this will help us. And so for that, everything is cluttering my mind. Everything is cluttering me. And so by seeing things as they are in right perspective, I can clear all the lascias. I can clear all the coverings. I can clear all the colorings. And so, the system which they have given is Kayotsarga. First, cleansing body. Then, when the body starts getting cleansed, then you will be able to connect to the internal centers. And so that is the Antarika Yatra. And then how can you continue with this Antarika Yatra? By either concentrating on your breath, Swasha Preksha, or by Sharira Preksha, any center of your energy centers in your body, or Chaitanya Kendra, any psychic center, जिसको हम कुंडलिनी, जिसको हम चक्रास कहते हैं. So by concentrating on there, or अगर हम बहुत ही ग्रॉस है, मूढ़ है, तो हमारी ऑरा कैसी रहेगी? डार्क हेवी, राइट? एंड अगर हम थोड़े थोड़े शुद्ध होने लगते हैं तो the lightness comes or the clarity comes. Yes, so by lascias. So how do we come to know about the lascia? When we are keeping our eyes closed. Earlier, very dense thinking are there. So then we see within us dark colors. When we are improving, automatically we start seeing light colors. And so through that, we are improving, we are practicing ourselves. And then being into present, Vartamana Preksha. Whenever I'm seeing things around me, I try to be in present. I try to be in present. If I am in present, I will not occur more karma, right? The moment awareness goes, we get into wrong things. And so by that, by being aware of my thought also, because by thoughts we are committing karma. Correct? पाप कर्म पुण्य कर्म सब कुछ वो हमारे मन से भी होता है, कायिक वाचिक मानसिक. And so controlling the thoughts, that is what the vichara preksha, and then following the discipline overall sanyama, and that leads to हमारी feelings becomes very pure. Bhavana preksha, हमारे feelings becomes pure. सर्वेत्र सुखिना type. हम सबको प्रणाम कर सकते हैं, हम सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. And that leads to ultimately contemplation, anupeksha, highest level of realization, or higher level of realization. Okay, and that finally leads us to dhyana, complete connections to the self within. And that is how we reach to Siddhasila. We come out of all the karmas, become free, and realize. Well, उन लोग ऐसे नहीं बोलते कि we realize that I am Arihanta, or yes, we realize that we are Siddha. May we all be Siddha, or may we all be Jaina in true sense. And that is what is the learning from Jainism. The comparison we'll do little later. Okay. What is Buddhism? Buddhism, which is given by Buddha, Gautam Buddha. He was not known as Gautam Buddha. That time he was known as Siddhartha. And because he has done earlier, many sadhanas, which, in Patanjali Yoga Sutra, different Samadhi avasthas is given.
So people who have reached to a higher level, they are born, and then after they get birth, in within few months or few days, few years, they can get realizations, right? For example, Shankaracharya and all. Correct? Siddhartha, Gautam Buddha was that person who has done the siddhis, done the sadhanas in earlier life. And that's why when he was born, it was announced that, he will be either Chakravarti or he will be the realized soul. Correct? The way, it was announced when, Krishna was born, that koi महान आत्मा आने वाला है कि जो सारे दुष्कर्मों को, और उसमें सबसे पहले दुष्कर्म करने वाला तू है दुर्योधन, सॉरी, तू है कंस, तेरे को सबसे पहले वो मारेगा. Correct? So like this, it is known fact. So Gautam Buddha was born to the king Shuddhodhan, but it was known to most of the people that he is going to become a very big sadhaka or siddha or enlightened person, and so Vairagi. And so his father wanted him to be Chakravarti Raja. And so he was kept aloof from, very ascetic life type of things. So he was put too much into normal bhog or normal life. But in that also, he was able to connect to the Vairagya Marga. Because whenever he had got chance to see the reality, he realized that Sarvam Dukkham, Sarvam Kshanikam, and therefore Sarvam Tyajyam. And when he realized that, so he got this understanding, because he was having great gurus. One of them was Sankhya from Sankhya Parampara. And according to Sankhya Parampara, what is world? According to Yoga Parampara, the world is, or according to Vedic Parampara, world has dukkha. Why? Because world is temporary or reflection. It is not real. And so it may lead to dukkha. But you can come out of dukkha. Yes, we can come out of dukkha by being with the eternal aspect of our life. And so that is what was his understanding also. So in that he was able to see that, कितना भी सुख है, ये वाला सुख एंड होने वाला है. क्यों? क्योंकि एक क्षणिक है, इसलिए मेरे को छोड़ना चाहिए. And so he understood this from these 4 examples of jara, roga, mrityu, and dukkha. And that 4 episodes in his life, not 4 episodes, from different episodes, he gathered this. There is a dukkha because of jara, because of roga, because of death, mrityu. And so what is inevitable? Dukkha is inevitable. And so I should come out of it. How can we come out of it? दुख अगर है तो दुख ऐसे ही थोड़ा है, दुख का कारण है. अगर वो दुख के कारण को हम हटाएंगे तो सुख आएगा. दुख है क्योंकि दुख का कारण है. दुख के कारण को हटाने से दुख की निवृत्ति होगी, और दुख की निवृत्ति के लिए दुख निवृत्ति मार्ग भी है. और इसीलिए what ऋषि पतंजलि talks about हेय हेय हेतु हाना हाना पानो, exactly like that. Gautama Buddha has given the system. So what is the path to come out of dukkha? What is the path of hana? Hana का उपाय या तो दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? And so he said that दुख निवृत्ति का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग. And what is that Arya Ashtangika Marga? Samyak Drashti, Samyak Sankalpa, Samyak Vak, Samyak Karma, Samyak Ajivika, Samyak Vyayam, Samyak Smriti, and Samyak Samadhi. What is the path of developing myself, or what is path? How can I work on myself? So I can work on myself. For that I need right knowledge. And that right knowledge, Samyak Gyan, or which is known as in Ardhamagdi Bhasha, what it is known as pragya, पंजाब या ऐसा पहिया क्या बोलते हैं वो, एक अभी मैं भूल गई क्योंकि बहुत टाइम से वो वाला शब्द ही मैंने यूज नहीं किया है. So yes, that is there, the pragya. So what is pragya? What is the wisdom? How we develop the wisdom? By right drashti, samyak drashti, and samyak sankalpa. Okay, right vision is most important. That comes from right knowledge.
Okay, so right vision leads to samyak sankalpa, right resolve. And when I decide, मेरा संकल्प सही हो जाता है कि मुझे क्या करना है, yes, आज के बाद यही करूंगी मैं. This is the path, this is the system which I am supposed to follow. So it is right resolve. Whatever is my right resolve should come on my speech. जो मेरे दिमाग में है वो मेरी भाषा में तो आता ही है. Correct? So that is what is right sankalpa, right speech, samyak vani. What you say, that you get. And that's why saying right thing. That leads to right karma, right conduct, right ajivika. Whatever is my conduct, I should be able to put right type of effort in, I should be having right kind of livelihood. When I am following right livelihood, that leads to right conduct. And right type of effort I am in need of. What right kind of effort we need to? अगर मच्छर को मारना है और हाथी को मारने जितनी ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? हाथ टूटेगा. और हाथी को मार रहा है और मच्छर जितनी ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? करेक्ट. एंड सो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट आई एम सपोज टू पुट. हमें किसको निकालना है? वृत्तियों को निकालना है. हमें किस में से ओवरकम करना है? पूरे वर्ल्ड से ओवरकम करना है. करेक्ट. हमें उसमें से निवृत्त होना है. तो उसके लिए कौन सा एफर्ट चाहिए? बहुत ताकत लगानी है 100 किलो की? नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई वो फिजिकल बात ही नहीं है. ये सब मेंटल बात है और ये सटल बात है. सो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट आई नीड? That should be understood very well. If I want to overcome karma, then not getting into karma is most important. So being aware all the time. And so हमारा पर्पस क्या है? कि हम ग्रॉस जीवन में से निकले. और हम करते क्या है? पूरा दिन ग्रॉस जीवन के लिए ग्रॉस जीवन में अटके रहते हैं. इज इट राइट एफर्ट और रॉन्ग एफर्ट? व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस? मोक्ष. लेकिन कार्यक्रम क्या करते रहते हैं पूरे दिन में? बंधन के लिए. तो फिर होगा क्या? हम लोग हमेशा हमारा कोई का भी राइट संकल्प नहीं है, राइट रिजॉल्व नहीं है. हम लोग सब चाहते हैं हाँ कि और सुख मिले और ये सब में. और हम फिर हम बोलते कि नहीं मुझे तो मुक्त होना है, सारी जवाबदारियों से मुक्त होना है. सारी जवाबदारियों से मुक्त होना है तो भाई अभी भी तो मुक्त है. क्यों जवाबदारी पालता है भाई? यू नो what is actually there in our mind is something else always. We are always in avidya and that binds us. First be clear, and that is what Gautam Buddha is telling us to do. That you must say, अगर मुझे वर्ल्ड पसंद है तो से वर्ल्ड पसंद है. हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि ना मेरे को तो छोड़ करके जाना है. हम सब लेडीज स्पेशली बोलते हैं कि हाँ मुझे तो चाहिए कि मैं आराम करूं. हाँ मेरे यहाँ घर चले. एक दिन जाए हम लोग और हमारे बिना घर अच्छा चलता है तो क्या होता है? अरे टीस उठती है यार, ये लोग तो मेरे बिना चला लिए. करेक्ट. डू वी एक्चुअली वांट? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है. डू वी रियली वांट मोक्ष? Nobody. That's the problem. That's why we are ना आ पार ना वो पार. अगर ये पारे तो बोलो, हक से बोलो कि भाई मेरे को अच्छे से जीना है. जीवेता शरद सतम मोदाम शरद सतम नंदाम शरद सतम. मुझे बहुत जीना है. हाँ वो लोग जब जीते थे तब बोलते हम गृहस्थ है तो गृहस्थ की तरह ही रहेंगे, खाओ पियो और वो बैलेंस वे में. यस, पर खाओ पियो मजा करेंगे. और अभी हम राम वानप्रस्थ बने तो अभी हम धीरे धीरे खुद के बारे में सोचने लगते हैं. और अभी हम सन्यास में गए तो बस अभी गृहस्थ खत्म, अभी सन्यास के बाद. तो वो जो सोचते थे वो ही वो करते थे. हम लोग जो सोचते हैं उसे ऑपोजिट करते हैं. सो ना तो हमारी राइट दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, ना तो हमारा राइट संकल्प है, ना तो हमारी वाणी पे वो बात है. हमारी करनी और हमारा थिंकिंग वो सब कुछ अलग है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग. एंड दैट्स व्हाई बुद्ध सेज what you want, that you विचारो. अगर जीवन में रहना है तो think that should be your effort, that should be your thinking. वही आपका आचार और विचार होना चाहिए. वो नहीं करना है तो अलग. And so he said, whatever level you are, follow this.
जो हमें करना है वही हमें बोलना चाहिए, और वो करते रहेंगे तो then that kind of livelihood we should have, that kind of effort we should put in, that kind of awareness, mindfulness we should develop, and so automatically that kind of ekagrata, concentration, connection we will attain. And so finally it will lead to realization, nirvana. To reach this nirvana, we need to be moment to moment aware. क्योंकि ध्यान भी नहीं रहता है और कैसे बाइंडिंग हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक से कुछ नहीं होगा। कल ही मैंने ऐसे किया, क्या थोड़ी देर के लिए नाक बंद 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 था, तो मैंने कहा कि अरे एक एपिसोड देखने से कुछ नहीं होगा, चला थोड़ी देर, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। ओके, और एक्स्ट्रा और एक चाय या कॉफी नहीं पी रही थी क्योंकि रात को सोने का था, तो मैंने बोला 5-10 मिनट, 15-20 मिनट में तो एक एपिसोड खत्म होता है। उसके बदले में 3 हो गए, 4 हो गए, 5, फिर रियलाइज, ओ बाप रे, सो जा भाई, सुबह जल्दी उठना है। तो फिर तो वो होता है ना, अभी एक जरा देख ले, अभी एक जरा, तो फिर 2 तो ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, और कुल मिलाकर के पता चला कि 1.5 घंटा निकल गया। क्यों? Lack of awareness, right? That's what Buddha says. Be aware, and then you will not suffer. And so, how to develop this moment-to-moment awareness? To develop this moment-to-moment awareness, not Buddha only, but all the people who have followed the path of Buddha given by Buddha, they followed the path of vipassana. Again, preksha ki tarah vipassana means seeing specifically, seeing clearly. Vishesha rupena passana. Passana means to see. खास रूप से, specifically, clearly, developing clear vision. And so, किसको देखना है? मुझे किसी और की तरह थोड़ा बनना है, मुझे मेरे शुद्ध रूप में जानना है ना, निर्वाण तक जाना है। I need to know myself, I need to see myself. Okay, so process of self-observation is most important in Vipassana. How can I know myself, or how can I see myself? Can I see myself? I cannot. तो मेरे सेल्फ के जो भी अलग अलग एस्पेक्ट है, सटल एस्पेक्ट, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। सो पहले मैं seeing the sensations, watching the sensations, feeling the sensation, at the same time feeling the breath, feeling the sensation. That can be the starting path, starting step of recognizing self, realizing self, knowing the self. And then, slowly, this anapana, breathe in and breathe out के ऊपर जो मेरा concentration है, that goes to the sensations, then subtle sensations, and then finally through that you connect to the self within. And so this is the sadhana of meditation, or becoming one with the pure consciousness without any coloring, without any thoughts, without anything. How we reach this? With mindful awareness, moment to moment awareness. And so that is what Lord Gautama Buddha has established in his own life, and that is what he preached to all the other people, and that is what the ultimate summum bonum of Buddhism, when we are seeing ourselves as it is without any karma. How karma comes into existence? Karma comes from my thinking or my internal systems, right? If I am controlling that at all, I am moment to moment aware, so that karma will not happen by me at all. We are having very, very important example of Buddha telling Ananda, paap hua. Paap hua kaise? Karma hua kaise? When I was not aware, कर्म हो जाता है. If I am aware, वो पाप नहीं होगा, कर्म ही नहीं होगा, तो पाप कहाँ से होगा? Maybe all develop this, eternal awareness, सतत हमेशा aware रह सके वो. Now, how we are comparing yoga in this?
So in Jainism and in Buddhism, both are Shamana Marg. Yoga is also Shamana Marg, working on ourselves. What is the main reason behind being into what? Bandhana? My karma? कर्म कैसे होता है? हाथ से ही माइंड से कायिक, वाचिक एंड मानसिक. कायिक से ज्यादा वाचिक, वाचिक से ज्यादा मानसिक. All the three systems believe in that. So जो भी हमारे कर्म, पुण्यशाली कर्म हो कि पाप वाले कर्म हो, वो सारे बनते कहाँ है? मेरे मन में. Why? How? In yoga we said it is vritti. In Jainism and Buddhism we say what? It's my kashayas. Correct? And so to stop them, you have to be aware. To be aware, you need to be very particular about, seeing yourself as it is. How you can see yourself as it is? By overcoming all these colorings or all these vrittis or all these thoughts. And so for that, sit with yourself, be with yourselves, either Svadhyaya or being connecting to self. So by Vipassana or Preksha or meditative system. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Jainism believes. Buddhism also believes, but Buddhism is not specifically talking about it. Yoga believes. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam. Yes. Arya Ashtangika Marg, Jainism, Buddhism believes. Arya Ashtangik Marg, Ashtanga Yoga is been believed by yoga also. And in Jainism also the path given of purifying ourselves means Samyak Charitra. So Samyak Charitra, in that we have given Ahimsa, Satya, Asteya, Parigraha, Brahmacharya, that has been taught by yoga also. Heya, Heya, Hetu, Hana, Hana, Pano is been taught by Buddhism, is also taught by yoga. And so, when it comes to realization, we need to come out of worldly affairs. Worldly affair is basically because of my mind, my chitta. And so I don't have to work on anything outside. I have to work on myself, chitta. And whether it is yoga, whether it is Jainism, whether it is Buddhism, they all spoke about this. And that is what the Jainism, Buddhism, and yoga talks about. In Jainism, you reach Kevala. In Buddhism, you reach Nirvana. In yoga, in Samadhi Avastha, you reach Kevala. Words are different. State is same. Correct? And then now, let us go on the important topic of our Patanjali Yoga Sutra, Ishvara. Rishi Patanjali says, or like other scriptures, Rishi Patanjali also says that why we are suffering? Because of the vrittis. Where are the vrittis? In my chitta. How can I overcome these vrittis? I can overcome these vrittis by abhyasa and vairagya or Ishvara Pranidhana. So actually speaking, Rishi Patanjali has given two paths. Abhyasa Vairagyabhyam Tanirodha Ishvara Pranidhana Dva or Ishvara Pranidhana. It is not Abhyasa or Vairagya or Ishvara Pranidhana. It is Abhyasa and Vairagya and Ishvara Pranidhana. Abhyasa is not alone. Abhyasa is needed, Vairagya ka support. And or Ishvara Pranidhana. So, Abhyasa Vairagya se kya paoge? Samadhi Avastha. The same Samadhi Avastha one can attain through Ishvara Pranidhana. How? Because Ishvara Pranidhana पे बोलते तो जो भी हमारे अंतराय है खुद से जुड़ने के रास्ते में वो सारे अंतराय दूर हो जाते हैं ईश्वर प्रणिधान से. दुख दौर्मना अंगम अजयत्व वाले वो सारे चित्त विक्षेप भी दूर हो जाते हैं. तो बचा क्या? कुछ नहीं. Pure consciousness. And so you can connect to that pure consciousness. That is what is the path of Ishvara Pranidhana. What is Pranidhana? Connecting.
identifying or surrendering all other things and connecting to one. मेरे जितने भी और सारे कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन को सरेंडर करके कोई एक कनेक्शन को, हाईएस्ट कनेक्शन को अपनाना. हम जनरली सबके साथ कनेक्टेड है. वी आर आइडेंटिफाइड विथ माइंड, बॉडी. वो सारे आइडेंटिफिकेशंस को छोड़ करके किसको आइडेंटिफाई करने का, किसके साथ कनेक्ट करने का, प्योर कॉन्शियसनेस विद इन. That is what the Ishvara Pranidhan is. So who is this Ishvara? कैसे पहचानने का? And so it is the system of style of Rishi Patanjali to describe everything. So who is Ishvara? Ishvara is that principle which is klesha, karma, vipaka, ashayai, aparamrushta, purusha vishesha. Ishvara is purusha vishesha who has no klesha, no raga dvesh, no avidya, asmita, raga dvesha, abhinivesh. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं है, क्लेश नहीं है, तो संस्कार होंगे नहीं होंगे, तो वृत्तिज होगी नहीं होगी. अगर संस्कार नहीं है, क्लेश नहीं है, संस्कार नहीं है, वृत्ति नहीं है, तो कर्म होगा नहीं होगा, कर्म बंधन होगा नहीं होगा. तो ये कुछ भी उनको नहीं आता है, बिकॉज इट इज ओवर एंड अबाउ, अपरामृष्ट टू ऑल दिस थिंग्स. Is that special Purusha is Ishvara. And this Ishvara is, pure consciousness is, special pure consciousness is, Purusha Vishesha is, Sarvagya Bijam, omniscient, omniscient. Omniscient when we say, knows everything, it is Sarvagya. It is eternal, Kalena Anavacheda. And Purusha, Purvesham api Guru, it is always who is not Lagu, who is not light, but it is very heavy and it's always existing from the beginning. Is the highest principle forever, Guru. And Tasya Vachaka Pranava, uska connotation, uska naam kya diya gaya hai? How we are recognizing it or how we signify it? We signify it as Pranava. What is Pranava? Pranava is Om. What is Om? Om is symbol of pure consciousness, symbol of Ishvara. So it has some akara, but at the same time, it is not having any akara. And that's how, Rishi Patanjali has maintained Nirakara Ishvara or, Sankhya, निरीश्वरवाद जो योग में शेश्वरवाद हो जाता है, लेकिन उन्होंने ईश्वर को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन नॉट दैट कोई पर्टिकुलर आकार वाला. दे केप्ट इट लाइक दिस. सो हाउ कैन वी कनेक्ट टू दिस पुरुष विशेष which is we connoted as Om, Pranava. Who is Pranava? Bhagavad Gita said Pranava is Adi, Madhya and Anta of the whole universe. Om Tat Saditi. Okay, and see, this Om is the starting of the whole universe. And so this Pranava or Om, what are we supposed to do? We should connect to it. How? Tat Japa, Tad Artha, Bhavana, with earth and Bhavana ke saath. With complete feeling, understanding and meaning ke saath. So Om 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 bol karke nahi. Yeah, connecting to that eternal sound everywhere which is prevailing. With that, what happens? Tataha pratyaka chetana. We connect to the individual self within. Antaraya ka abhava ho jata hai. And so that is what Rishi Patanjali is talking about Ishvara. And when we practicing ahimsa, when we are practicing abhyasa, vairagya, at the same time when we practice Ishvara Pranidhan, either abhyasa, vairagya or Ishvara Pranidhan, when we practice both the things, it leads to what? Abhyasa, vairagya also leads to Samadhi. Ishvara Pranidhan also leads to Samadhi. What is Samadhi? Samadhi is Adi, Vyadi, Upadi, Rahit, Avastha. The highest state where we realize I am pure consciousness.
if it is the highest state, to reach that highest state, there are so many other stages. What is what is Samadhi? Samadhi is the highest siddhi. So what are the other siddhis? There are so many other siddhis. How do we reach the highest siddhi? Highest siddhi we reach either by abhyasa vairagya or ishvara pranidhana. अगर हाईएस्ट सिद्धि लास्ट स्टेशन तक अगर हम पहुंचते हैं तो बीच के रास्ते के स्टेशन पे भी हम पहुंचते हैं अभ्यास एंड वैराग्य से, ईश्वर प्रणिधान से. ऋषि पतंजलि says yes, Samadhi is the last station where we when we come out of that or when we reach there, we realize I am keval one and only one pure consciousness. So last वाले स्टेशन समाधि तक हम जाते, रास्ते के बीच में कौन से स्टेशन है? बहुत सारे स्टेशन है. No, we don't want to go no way. When you start journey, station will come. अगर अभ्यास वैराग्य शुरू किया है या तो ईश्वर प्रणिधान किया है तो आप ये सारे स्टेजेस के थ्रू जाओगे. What are the stages? They all are in itself pure state of mind. थोड़ा और प्योर, थोड़ा और प्योर, थोड़ा और प्योर, ऐसे अलग अलग प्योर subtle state of शुद्ध mind. And so they are the different stages of siddhis, different stations. How do we reach? Either by abhyas and vairagya or by ईश्वर प्रणिधान. तो अभ्यास किस चीज का करना है कि हम वहां पे पहुंचे? ऋषि पतंजलि ने कहा है either क्रिया योग और वा टेक्निक और ईश्वर प्रणिधान, और क्रिया योग तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान or Ashtanga Yoga. When you are practicing any of these things, what will happen? Ashuddhikshaya, Jnanadipti, Aviveka Khyati. That leads to Viveka Khyati. And so when we want to reach to Viveka Khyati, what I am supposed to do it? Kriya Yoga, मतलब तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि. So when I am doing either tapasvadhyaya ishvara pranidhan or I am doing abhyas vairagya or ishvara pranidhan or I am doing yama niyam asan pranayam pratyahar dharana dhyan samadhi, through all that thing I am reaching to samadhi. If I am reaching to samadhi, it means chitta vritti kam hui. Yes. अगर चित्त वृत्ति कम हुई तो different stages आए. Yes. So different better state of चित्त वृत्ति निरोधा, थोड़ा हायर कम वृत्तियां होती जाती है. वो स्टेज कहां से शुरू होता है? सीधा समाधि में आएंगे तब यम नियम से भी शुरू होता है. राइट. अहिंसा प्रैक्टिस करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी थोड़ी सी. सत्य प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी चित्त शुद्धि होगी. करेक्ट. All that leads to chitta shuddhi, thoda. So all that leads to thoda siddhis. And that is what is been described by Rishi Patanjali कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्याग्य सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपजायन्ते अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह जन्म कथनता संबोध एंड ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम हमारे जो इष्ट देवता संप्रयोगे एंड शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर में when we are following the shaucha, the swanga jugupsa, parer asamsarga, and then finally it leads to capacity to योगत्वानी च आत्मदर्शन योगत्वानी च, खुद का आत्मदर्शन हो सके वो लेवल तक हम पहुंचते हैं. करेक्ट. व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग प्रत्याहार एंड देन हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आता है. करेक्ट. व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग आसना, it leads to sthiram sukham asanam, it leads to tapodvandva anabhigata. When we are practicing pranayama, तो सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है. एंड देन अंदर का जो प्रकाश ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, हमारे अंदर का ज्ञान का जो प्रकाश है वो अवेलेबल होता है. प्रत्याहार लीड्स टू इंद्रिय कंट्रोल ओवर इंद्रिय एंड धारणा सुयोग्यता मनस, हमारे मन को धारणा के लिए तैयार करने लगते हैं. एंड देन व्हाट इज धारणा? धारणा इज हमारे माइंड को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना. देशबंध चित्त से धारणा, that dharana becomes dhyana, and that dhyana becomes samadhi. Swarupa shunyam eva. That level tak hum pahunchte. This dharana, dhyana and samadhi all together is known as sanyama.
When we are applying dharana, dhyan, samadhi, when we are applying dharana, dhyan, samadhi, when we are applying dharana, dhyan, samadhi, it means when we are applying sayama, we start getting different siddhis, which will ultimately lead to samadhi. And what are that siddhis? These siddhis are different stages. It is like acclimatizing us to be vritti nirodha completely. अचानक इतनी सारी वृत्तियों में से वृत्ति निरोधों पे चले जाएंगे तो कैसे जीने का समझ में नहीं आता है। अचानक इतना बोल करते हैं और चुप रहने को कोई बोल दे तो कैसे पागल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुए। इसीलिए different stages which Rishi Patanjali has described. So when you are going through, all these are there. We all get all these stages. This siddhis in itself is some attainments which will lead to higher and higher and higher. But being human, sometimes it happens that we get stuck with some or the other samadhi. ऋषि पतंजलि से भाई बहुत मेहनत की है, अभी अटक मत, हाईएस्ट सिद्धि तक पहुंच जा, फिर ये सारी तुम्हारे पास रहेगी, ये कभी चली नहीं जाएगी। हमें क्या लगता है, वो उसके जैसा एक वो था ना, वो लक्कड़हारा, हाँ, तो उसकी वो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई तो उसने कहा कि वो कुल्हाड़ी वापस आई, तो उसने बोला कि नहीं ये मेरी नहीं है, तो फिर चांदी की आई। अगर वो चांदी में अटक गया होता तो उसको सोने की नहीं मिलती थी, लेकिन वो सोने में भी नहीं अटका, बोलेंगे नहीं ये मेरी नहीं है, तो फिर उसको क्या मिला, तीनों मिली, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट व्हेन वी गो टू हायर, बाकी सारी सिद्धियां चली थोड़ी जाती, बाय बाय जा तूने मेरे को नहीं लिया तो, नो, all of them remains with you. You enjoy all the Aishwarya. Whatever you want to use. You don't want to use, no problem. Correct? And so all these siddhis are coming to us. And these siddhis, when we are reaching in that, all the siddhis are, we are getting anima, mahima, garima, laghima, prapti, prakamya, ishtatva, varshatva. Not only that, but we get, siddhi of, पानी के ऊपर चल सकने की, पंख, कादव कीचड़ से भी ऊपर जाने की, परकाया प्रवेश, दूसरे का चित्त समझने का, भूख प्यास पे कंट्रोल, हवा में उड़ सकते हैं, नो, वी कैन गेट द होल नॉलेज ऑफ भुवन ज्ञान, होल नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, we know the knowledge of our body, we get the knowledge of different sounds around us, and then finally, we can get, prana, apan, vyan, udan, saman ke upar jaya, and then finally we reach to the highest siddhi of, pradhana jaya, सारी प्रकृति के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है। वहीं पे भी अगर नहीं अटकते हैं तो ultimately what we get is highest siddhi of samadhi. What we get is kaivalyam, and that kaivalya is realizing ourselves as it is. What happens when we realize ourselves as it is? And that is what is been described by Rishi Patanjali in first chapter, Samadhi Pada, in fourth chapter, Kaivalya Pada, and how to reach this first chapter, the destination described in first chapter. How you reach there? Through the second chapter, Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. And when we are practicing second chapter, Sadhana Pada, Kriya Yoga and Ashtanga Yoga, we get the results which has been described in Vibhuti Pada, the third chapter. And that leads to Samam Bonam of realization. The last stage is Kaivalya. That has been explained in the fourth chapter. So what is Samadhi? Samadhi is Adi Vyadi Upadhi Rahita Avastha. What is Samadhi? Samadhi is Vritti Nirodha Avastha. How do we get this Vritti Nirodha? By Abhyas Vairagya and Ishvara Pranidhana, or Vava techniques, or Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. Okay. तो उसमें बड़ी बात यही है कि when we reach Samadhi, then different changes are happening. What changes? The changes which we mention as siddhis, exactly वो क्या होता है? So we get control over our mind, control over our indriyas, control over our body, and all that is been given by Rishi Patanjali in different stages. So when this shuddhi is happening, when this starting siddhis are attaining, तो starting siddhi क्या होंगी?
स्टार्टिंग सिद्धि ये है कि हमारा माइंड शुद्ध हुआ, तो नो थॉट, सीधा नहीं, थॉट है। कौन से वाले? क्योटिक, नेगेटिव, हाँ, क्लिष्ट, नो वो गए, अक्लिष्ट। अक्लिष्ट है, हाँ, अक्लिष्ट है मतलब सत्व थोड़ा ज्यादा है उसमें, हाँ, इसलिए कौन सा हुआ? प्रज्ञा वाला हुआ, ज्ञान वाला हुआ। हाँ, so ऋषि पतंजलि says that when you do अभ्यास एंड वैराग्य, अशुद्धियां जाएगी, वृत्तियां जाएगी, लेकिन मतलब कम हो जाएगी, लेकिन कौन सी वाली रही? विप्रज्ञा वाली रही। एंड सो इट इज नोन एज संप्रज्ञात समाधि। सवितर्क, सविचार, स आनंद, सानंद, स अस्मिता। So where vitarka is there, the logic is there, reasoning is there, who am I, what I am, अरे हाँ यार, अभी ये गलती नहीं करूंगी मैं, ये realization है, that is helping me to become get convictions, correct? And so that helps. So this thought is there, this logic is there, and so it is helping me to go higher. अक्लिष्ट वृत्ति किसको हम कहते हैं? वो वाली वृत्ति which helps us to go towards कैवल्य। क्लिष्ट वृत्ति कौन सी? which harmful वृत्तिस which takes me to बंधन, करेक्ट? हाँ, सो ये वृत्ति है, ये थॉट है, आर्गुमेंट्स है, लॉजिक है, रीजनिंग है, पर खुद को पहचानने के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सवितर्क। And then that leads to savichara. So from reasoning, it goes to the higher level of savichara, and then on the reflections. Oh, with so many vrittis, I will get stuck. So if I reduce furthermore, so this understanding, this, talking to self or clearing our doubts on our own, that process is going on. And so some deliberations are happening, and that level is known as savichara, sampragyata samadhi. And then we start feeling better about ourselves, clear about self. And that's why it is, the glimpses of bliss happens, and that is sananda. Why that comes? Because we are seeing ourselves clearly. Who am I? I'm pure consciousness. And that will start happening. 1 second, now 1 second. Correct? And so we start knowing ourselves very clearly. Who am I? Am I this mind? Am I this body? No, I'm not. I'm much better. I'm much better. This understanding started developing at this level, and that's why it is known as samadhi. आदि व्याधि उपाधि सब चली नहीं गई है, लेकिन आदि व्याधि उपाधि थोड़ी तो कम हुई है, करेक्ट? सो ये अवस्था को हम समाधि कहेंगे। पहले दिन जो न्यायिक है उसको भी न्यायिक कहेंगे, पहले दिन का जो योगी है उसको भी हम योगी कहेंगे, वैसे ही पहले दिन शुरू का जो समाधि उसको हम समाधि कहते हैं। लेकिन कौन सी समाधि? विथ प्रज्ञा, संप्रज्ञात समाधि। ऋषि पतंजलि सेज व्हेन यू गो बियॉन्ड दिस अन्य, दैट इज नोन एज असंप्रज्ञात। वो वहां से भी आगे चले गए, विचारों से भी परे जाने लगे, वो होता है असंप्रज्ञात समाधि। When we are in sampragyata samadhi, there is a bija, there is a seed, there is a thought. Yes, that's why it is known as sabija samadhi. There is a thought. Yes, it is there. Therefore, it is savichara samadhi. Then, when we go beyond that, we are without that. Okay, when we are at this level, our mind becomes like what? Mind becomes like money, crystal, which is reflecting completely all the things on which we are pondering or on which we are connecting on that subject, on whatever subject we are
that is being amplified, reflected completely. Correct? And so here we are having this Vashikara level. हमारा माइंड में has no complete power कि अगर अणु है तो उसको भी completely reflect कर सकते हैं, और the whole पूरा यूनिवर्स है उसको भी completely as it is reflect कर सकता है. Actually, that is why, all our rishis were able to know about everything. Correct? At this such different levels, they have done different research. Whatever results they got, whatever visions they have got, that is what, they have written it down. And then we can see around, okay, yes, that is the truth. Because Pindeshu Brahmande, whatever is there in their Pinda, that is there in the Brahmana, they are able to connect to that. They are able to know that things. Okay. And then from there, when we are going to the higher level, and then ultimately from this Savichara, when we reach to Nirvichara, from this Savikalpa, when we reach to Nirvikalpa, when we from this Sabija, when we reach to Nirbija, and that is the highest level of Samadhi where Kaivalya occurs. And so, when this Kaivalya is occurring, Rishi Patanjali says that, when we are on this path, where, sampragyat se bhi thoda aage jaane lage hai, ya to when the pragya level is there. So which pragya? What is pragya? Pragya is that higher knowledge. Pra means always pragati, praga means higher. So gya means knowledge. Higher knowledge. नॉर्मल नॉलेज जो है उसको हम ज्ञान कहते हैं. ज्ञान से भी जो हायर है, परे है, उसको कहते हैं प्रज्ञा. जो हमारी 5 इंद्रियों से भी परे का जो नॉलेज है उसको कहते हैं प्रज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा. करेक्ट? सो दैट इज द हायर नॉलेज, सटल नॉलेज. एंड सो व्हेन वी आर एट दिस लेवल, ऋषि पतंजलि सेज वी आर गेटिंग ऋतंबरा प्रज्ञा. Correct? And what is the Rutambara Pragya is all about? It is knowledge, higher knowledge. Higher knowledge about what? Rita principles. What is Rita principles? That ultimate principles. Either you call it Purusha, or you call it universal self, or you call it Atma Tattva or Paramatma Tattva. You start getting the knowledge of that. And so, this knowledge which we are getting there, it is beyond this, Shruta or Anumana Jnana. Shruta Jnana or Anumana Jnana. Shruta Jnana or Anumana Jnana क्या हुआ? Shruta knowledge और Anumana knowledge जो सुन करके हमने लिया है, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया है. या तो अनुमान इन्फरेंस है, लेकिन इट इज नॉट माई नॉलेज. सुना हुआ है, सिर्फ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाला ज्ञान उससे परे है. क्यों? क्योंकि ये अनुभवजन्य ज्ञान है, वो मेरे अनुभव से आया हुआ मेरा ज्ञान है. When we reach to that knowledge is the Rutambara Pragya. इसको Rutambara इसलिए कहते हैं कि it is full of, this knowledge is full of Rita principles. इसलिए उसका नाम ऐसे दिया गया है. And this is the level of, ये प्रज्ञा में भी हम अटके नहीं है. तस्यापि निरोधे. When we go आगे, सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, तब हम निर्बीज समाधि की तरफ जाने लगते हैं. एंड जब हम निर्बीज समाधि की तरफ जाने लगते हैं, जब हमारा कैवल्य होने लगता है, Rishi Patanjali says that when we are at the path of Nirvija Samadhi, last level pe, that time we get Mana Prasada, Adhyatma Prasada. When we are not getting stuck with this, Ritambara Pragya also. नहीं, Ritambara Pragya hai, Jnana hai, so still thoughts are there. Still Vichara is there. Complete Nirvichara Avastha nahi aayi. So when we are going higher and higher, or Shuddhi, thodi or Shuddhi, when we are on that path, that time Mana Prasada, Chitta Prasannata starts happening. And so that Adhyatma Prasada, which is happening, and that Adhyatma Prasada is what we talk about Viveka Khyati when it comes. When it comes?
अष्टांग योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय हुआ, तभी ज्ञान दीप्ति हुई। कौन सी ज्ञान दीप्ति हुई? यही ऋतंबरा प्रज्ञा, अध्यात्म प्रसाद and that leads to viveka ख्याति. Distinction between what is Purusha and Prakriti. We can see Purusha as it is. We are connecting the Purusha. Purusha Khyati is happening. And so, Purusha Khyati, मुझे मालूम है Purusha कैसा है. Now I know distinctively, and when we stuck there, then we remain there. It is higher level, but it is not the highest level. And so, Rishi Patanjali says that, हमारा हेय में से बाहर निकल रहे हैं. Why? Because उसका जो हेतु है, कारण है, अविद्या, उसको हम दूर करने लगे हैं. तो विवेक ख्याति हुई है जो हमें पुरुष ख्याति तरफ लेके गए. And when we go higher than this, that time Rishi Patanjali says Kaivalya comes. Why? Because there we understand what is dharma principle. Because no other thoughts, only pure consciousness is there. And so it is getting reflected. Pure consciousness is almost reflected in that person. So that person is like what? Pure consciousness fully expressed in that person. That person is like virtuous person. हम उन्हीं को भगवान बोलते हैं जब. Correct? क्योंकि उनके through, all that good qualities is getting expressed. कभी राम ने ऐसे मतलब जन्म से राम, जन्म से बुद्ध, जन्म से कृष्ण नहीं. They have gone through this. And then वो जहां जाते थे, वो जो चीज को छूते थे, अहल्या, शीला की अहल्या की स्त्री बन गई. कैसे? उसके अंदर का प्रकृतित्व या तो मूढ़ता जो था, तमस था, वो खत्म हो गया. कैसे? उनके स्पर्श कैसे? Because this person became, they become virtue personified, they become. Because pure consciousness is getting reflected completely, fully. हम में है वो pure consciousness है. हमें completely reflect होता है? नहीं होता है. क्यों? वृत्ति साधे. उनकी वृत्तियां हट गई है? हाँ, हट गई. So what is getting reflected is pure consciousness. And that is the level of dharma mega samadhi. When somebody, the person who is at this level of cleansing, wherever they are going, they themselves, they are becoming mukta, and they are helping others also to become mukta. They are virtue personified. तो फिर कितना मजा है ना, आपने तो भगवान बन गए. कितने मजा ना, आपने तो भगवान बन गए. जो वो सोचा वो 99 का सर्प या तो वहीं पे अटका रहा या तो वहां से नीचे आया. लेकिन जो उससे भी ऑन चला गया, धर्म में समाधि में भी नहीं अटका, वो they will reach to Kaivalya. And then no 99 का सांप is waiting for you. Then you are free, mukta, established in self as it is. May we all reach to this Kaivalya in this very life itself. And that's what is we all need. We have reached to Kaivalya in this very life itself. Do we feel that we have reached that? Yes and no, right? We understood it, but we are able to not practice it. But we all are getting the conviction. And so what do we need? Yes, we've now got the path. Now we need conviction or the strength to follow it. अभ्यास करना है, तप करना है, और उसके लिए हमें गुरु की कृपा की जरूरत है. और we need somebody who just push us and put it there and or या तो कोई ऐसी सिस्टम जो हमें वो क्लेम कर दे. करेक्ट? ऐसा कोई योगी, ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई केवली जो आकर के हमें हेल्प करे. करेक्ट? Yes, and we start walking once again, and we start walking. Don't you think we will find somebody? We do find, right? We do find.
Yes, Samir bhai, bolo. Raksha, those who achieve Mahamandaleshwar 1018, you think they are gone up to Utambara Prajna? No. See, Mandaleshwar, right now, whatever we are talking about, these degrees. So they are the degrees. Even in Jainism, this Acharya, Upacharya, these are the degrees. So that shows that, they have learned this worldly. And they are at a higher level in their practices also. But who have reached to that level, they don't need any degree also. Correct? They don't need. So it's not that they have not. But it's not compulsory that they have become Mahamandaleshwar, so they have reached to that. We may not be able to know that the truth. Why? Because ourselves, we have not reached anywhere also. So we have no parameters with us, correct parameters to reach there, right? So we are not the right people to judge them. Correct? They can be, they may be, they may not be. Correct? So they are also like us, working higher. We are maybe in pre-primary, they are in secondary or higher secondary or whatever level, PhD level. We have no idea what level they are. There are people who are no Mandaleshwar at all, but they are yogis. And we have no idea. So possible. So their journey is different. These other people's journey is different. उन्होंने अलग ट्रेन ली हुई है, हम लोग ने अलग ट्रेन ली हुई है. We can say that. Correct? Yes, Deepak bhai. Ma'am, I just wanted to ask, once one reach the dharma make samadhi, so it becomes self as a pure consciousness, right? Or it is Becomes beyond? as if pure consciousness. See, we have to remember one thing, that at all these stages we are understanding from our point of view as a person. And so we are trying to know pure consciousness through mind. Right. Mind abhi bhi as a medium hai. Right. Correct? हाँ. So medium अभी मन है और मन के द्वारा हम प्योर कॉन्शियसनेस को पहचाने. हमारा मन इतना शुद्ध हुआ है कि मणि के जैसा हुआ है कि वो पूरे प्योर कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है. नो नेगेटिव वृत्तिज आर देयर. ओके, हाँ. सो मन है, सो अभी भी वो एकदम शुद्ध चैतन्य बनाया, लेकिन वो प्रकृति से परे नहीं हुआ. करेक्ट? वो प्रकृति से परे नहीं हुआ है, तो धर्म में लेकिन बहुत शुद्ध हुआ है. Yes. What I mean to ask कि धर्म में समाधि के स्टेज से भी आगे जाना है. Yes, धर्म में समाधि को भी छोड़ना है, तभी जाकर के. हाँ, वही तो लास्ट सेंटेंस है ना, वैराग्य तद वैराग्यात, then only we reach to the what is the last sentence? उसमें क्या कहा है, वो सूत्र में क्या कहा है? पुरुषार्थ शून्य. हाँ, पुरुषार्थ शून्य कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानां. हाँ, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप. सो उसके बाद में ही प्रकृति लय होता है, वहां तक है प्रकृति. मतलब धर्म में समाधि तक सभी समाधि है, जितने भी समाधियां है. अब तो धर्म में कह सकते हैं, क्योंकि धर्म में समाधि के पहले भी मतलब वहां तक चांसेस आर कमिंग बैक इज देयर. कहा है? क्योंकि अगर धर्म में भी हम लोग को तो लगने लगता है कि ओहो अपने तो बहुत महान हो गए. करेक्ट? हाँ. सो गिरने का चांस है, उससे बियॉन्ड है, फिर वो लोग नहीं गिरते और योग भ्रष्ट नहीं बनते. वो गिरते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पापी हो जाते हैं. No, they start helping other people and all. But then they need, another birth to again realize the samadhi. So they are either there, continue working there, helping other people, but not getting involved. Then they can continue. And when they go beyond Dharma Mega also, then they are the realized people. And then coming back or falling down is never happening. So they will not take birth again, right? They will not take birth again. Whatever birth happens, then that birth happens like, for, special duty. भेजा गया होता है उनको. Like duty and all.
Ma'am, after dharma make samadhi also, birth will be there if at all you don't go higher. What? So before reaching Kaivalya, if you are in dharma made samadhi, again you will get rebirth to reach the Kaivalya. वो हम वहां पे पहुंचेंगे ना तब तय कर लेंगे. Okay, it's not like rebirth. Okay, they do take birth, they can take birth. Okay, जैसे हम लोग ने वो छोटी वाली एग्जाम्पल हम लोग ने सुना था इनका भरत मुनि का. ओके, तो वो भरत मुनि वो हिरण को हेल्प करने गए थे. हाँ, so chances of getting involved is there in dharma mega samadhi. Okay, so but when you go beyond that you have nothing can make you disturbed or get into any objective world. So then that's why they say when you go beyond that, then no birth of nothing, because no sabiji samadhi. Yeah, that is the actual kaivalya. Otherwise you are at different level of samadhi avastha. Dharma mega samadhi is the highest samadhi avastha. Beyond that is nothing else but kaivalya. Correct? And so may we all get this level of kaivalya. हाँ, तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि यार कोई तो एक ऋषि पतंजलि जो आए हुए हैं एक्चुअली हमारी लाइफ में, वो आए और हमारे ये सारे लेके जाए. तो है ना, मेरे को किसी ने ये भेजा था, कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है. मैंने बोला किसकी वजह से हम अटकते हैं? ये मैं और ये मेरा. That only leads to klesha. That only leads to smritis, sanskaras and vrittis. ऐसा एक चोर मेरे घर आ जाए और सारी हमारी वृत्तियां ले जाए तो मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राग भी ले जा, मेरा द्वेष भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राग भी ले जा, मेरा द्वेष भी ले जा. कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है. मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरा राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा. कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है. मैंने बोला मेरा राग भी ले जा, मेरा द्वेष भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा क्रोध भी ले जा, मेरा राग भी ले जा, मेरा द्वेष भी ले जा, मेरा क्रोध भी ले जा, मेरा लोभ भी ले जा, मेरा मोह भी ले जा, मेरा हार भी ले जा, मेरा गम
भी ले जा मेरा राज भी ले जा जो भी दिखे जो ना दिखे वो भी ले जा कर दे मुझे आजाद कर दे मुझे आजाद आजाद आजाद। कल रात आया मेरे घर एक योग। थैंक यू सो मच। नमो नमः। ऑल द वेरी बेस्ट। Namo Namaha, ma'am. Thank you, ma'am. This Namo yoga Namaha, in ma'am. your life. Namo Namaha. Thank you so much, ma'am. Namo Namaha. Thank you, Thank ma'am. you so Thank you much. so much, ma'am. Namo Namaha. We'll do one Om and do Shanti Mantra and complete our class. Or short or long. Inhale. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Namo Namaha, ma'am. Namo Namaha. Thank you so Thank you, much, ma'am. Namo Thank you, Namaha. ma'am. Namo Namaha. Jai Shri Namo Namaha, Krishna. Namo for this Namaha. revision. Namo Namaha, ma'am. Jai Thank Shri you. Krishna, ma'am. Namo Namaha. Thank you so much, ma'am. Namo Thank you so Namaha. much, Thank you ma'am. so Thank much. you, ma'am. Thank you. बहुत Namo बहुत Namaha, लाइट ma'am. कर दिया आपने। Thank you so Thank much. you. Namo Namaha. Thank you. Thank you, Miraji. Thank you so much. And thank you, everybody. Because Thank of you. all of us together. मैम मैं स्टॉप कर दूं मैम वीडियो स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग
recording is stopped. स्टॉप कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you.